Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Good evening, everyone. All right, looks like there's a lot of excitement today. These are exciting times, है ना? These are also very confusing times, isn't it? For one, the weather is also playing havoc. You don't know whether to wear a sweater or a t-shirt, isn't it? When you wear a sweater, then you have to wear a t-shirt. When you wear a t-shirt, you have to wear a sweater, right? You have to study for your optionals and GS mains, and then you think that prelims is too near, and then you have to study for your prelims, and then the feeling comes that prelims ho bhi gaya to, right? And what even if we do prelims? So basically, on the board, we have a very significant number. Remember, life is a numbers game, right? Life is a numbers game. How is your preparation? It's a simple number. It's a score that you are going to get. How have you performed in an exam? It's a number, isn't it? How many years can you study in class 6th? What is the correct answer? 1 year, which is why they make the benches small, so that next year you should not be fitting in the benches. Some of you will get UPSC centers for your prelims. Unfortunately, sometimes you may get a center where there is a 6th grade and 7th grade students. So some of you will have trouble fitting in, right? So everything is a numbers. 95 is an important number. What is 95? Number of days left for the prelims examination. Some students are still guessing. अब पता चला. कुछ लोग अभी भी 5 months जोड़कर बैठे हुए थे, है ना? All right. So before we begin, and before I begin with my agenda, preparing for prelims, I want to ask, what are your primary questions, or what are the big questions that are coming to your mind? So I'll try to take as many questions as possible. Yes, so can you get started with the questions that you have in mind before I start speaking on the agenda that I have in mind? बोलिए. हाँ? Sleep? Skip. पहला सवाल. You could have not been more. Skip 2023. मुझे लगा था to skip or not. मुझे लगा था ये दूसरे पेज पर आएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा. अच्छा वो सब तो ठीक है सर, आफ्टर ऑल द लेसन्स, है ना? बट ये पहला सवाल ये टू स्किप और नॉट, है ना? टू डू इट और टू नॉट डू इट. वंडरफुल. ऑल राइट. Yes, now little more relevant questions. Yes, more relevant questions. Prelims versus mains. Next. Test series. Prelims versus mains. Let us not call it prelims and mains. Now it is prelims versus mains. So you have half your answers there. All right, yes. The ladies not asking any questions? Accuracy problem. Cover current affairs with SFG or even without it, okay? Ideal score in mocks. Number of attempts. सी सेट. ये पिछले साल से ऐड हुआ है ये क्वेश्चन में, पहले नहीं पूछते थे लोग. Only since last year people have started asking what to do with CSAT. So now you realize that how government policy makes a lot of changes, isn't it? Always used to be, yes.
own plan plus SFG. Time management. All right. Number of revisions. Subject wise time allocation. SFG, online or offline. Is one day enough? All right. Can we leave art and culture? हाँ, उसके बाद we'll in the end we'll come back to polity, right? That's how it starts. Is it as vital to leave art and culture? उसके बाद ancient and medieval, फिर modern history, environment and ecology, science and tech, है ना? Then three last remaining bastions: geography, then economy, and then polity. Analysis of mocks. Between two choices. With respect to a timeline, whether we are on the right track or not. Yes. Sectional versus full length test. Reduces negative marking. Okay. चलो 2 पेज का क्राइटेरिया था यहाँ पर. हाँ बोलो. Sectional versus full length. Sectional versus full length. Yes. How to revise fastly? Fast revision. How to revise fastly. Optimum number of notes of SFG. हाँ. Sir, attempting test series without feeling confident. Attempting test series without. Attempting test series without, there can be n number of things. Without filling the form, without preparation. Which one is yours? Without having paid for it. That's without registering. What is your question? Attempting mock tests without what? Without having confidence. Okay. Last? Okay. Last 1 month. Number of hours to study. Very good question. Yes. हाँ. बोलिए आप. Comprehension. Okay, CSAT. CSAT I may not be able to take in this because I think. How to improve score in mocks. Plus stagnancy. Very good, हाँ. Last week में क्या पढ़े? हाँ. Whether to leaving a question. Okay, broad contours. Basically, in the exam, what can be your strategy? Leaving a question. ठीक है. टेक्निक्स की क्लास यहाँ पर शुभम सर लेंगे, लेकिन यूपीएससी इज ऑल्सो वॉचिंग द वीडियोज. ये भी एक दिक्कत है, इसलिए सब. हाँ. स्कैटर्ड टॉपिक्स. One subject plus parallel subjects. Very good. Okay. QP solving strategy. चलो लेट अस बिगिन. दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ. ठीक है, 2 ही स्लाइड बनाए थे इसके लिए. ठीक है, ऑल राइट. सो वन इज not this question, we'll take that question at the end. All right, skipping 2023. All right, we'll take that one at the end. है ना? But right now, going ahead, let us get clear with a few assumptions. Prelims versus mains. This is approximately the time when we have to
move completely to the prelims examination preparation. We have to learn to let go. One of the keys to getting success in life is learning how to say no. So this is very crucial, bachas. Right now, you'll be flooded with your mains GS preparation, your mains optional preparation, and you're also probably at a stage where you will also have the pressure of continuously thinking that what if prelims happens and then mains does not happen. I want to guarantee you one thing. Every year, not a few hundred, but a few thousand students will clear the mains with lesser preparation or without adequate preparation for mains. I would not say the same about the prelims. I repeat, every year, people with inadequate preparation for mains will clear the mains, but I would not say the same about prelims, at least not any longer. Okay, so that should give you a lot. I guarantee you one thing, that if you clear the prelims, if you are good enough to clear the prelims, you are very good enough to clear the mains, irrespective of your stage of preparation. And I'm not saying this just for the motivation. कि इस बहाने पढ़ाई कर लो. That is not the point. It's not the same advice that parents give when they say that 10th की पढ़ाई कर लो, rest is sorted out. है ना? It's not that. Trust me, focus on the prelims right now and focus only on that parts of the syllabus that are either common to prelims or mains or are exclusive to the prelims examination. All right, is the time where you let go of the part of the syllabus which is not there for the prelims examination. I also want to tell you here very clearly and very confidently that even if a large part of your optional is left, I have always seen, this has been a commission UPSC method of clearing the exam, that there will be few people who may not have done their optionals. They will come, they will see, and they will conquer. Vini Vidi Visi. They will be in the running year, they will be doing their optional, they will be scared like anything. And fear sometimes is a very good feeling. Fear is sometimes, it makes you do things. Hannah? You, all of you are afraid a little? I would be afraid if you are not afraid. Right? Hannah, thoda dar, a reasonable amount of fear is an important human emotion, and it is important, it is a great driver of endeavor. If you are not afraid, probably you will be too lazy to walk up and just come to this classroom or do anything. So please adjust to a new normal for yourself, that in the next 95 days or so, that we are going to be afraid, and depending on when the results comes, till the day of the result, you are going to be afraid. This fear is not so much with respect to success or fear, as it has to do with the uncertainty of what will happen. Right? Once you know something is done, it's a lot more easier. So be clear with a few things, that this is the time when we completely move to the prelims examination. If at all, this is especially now, there is a differentiation here. There are some students who have already cleared the prelims before. There is a significant number of students who have cleared the prelims before. So for those students, you can go on. Honestly, this year from NPA, we have at least, I think, 41 students who are appearing for interview with us for a second time, so that they are able to improve their ranks. 41 of our internal students from the MGP program or other programs. MGP Current Affairs and even Foundation. So I can tell you that there are a lot of people who may, so this is just for those of you who have not cleared the prelims or not written the prelims even once. You can right now go ahead with your mains preparation if you have cleared the prelims twice or more. If you have cleared the prelims twice or more, you can go ahead with a little bit of mains preparation. But if you have not cleared the prelims twice or more, then it is very important that you switch to the prelims mode right now. I also want to tell you that this switch, we are humans, not a machine. It's not like the regulator of a fan ki aise kiye aur turant hawa behne lagi. That won't happen. That switching will take time. The orientation that is needed for the prelims examination, that will take time. It will take you approximately at least 3 weeks to make that switch. Okay? There are 3 things I want to tell you as of now. Okay? कि कैसे आपको begin करना है. In these 3 things, extremely important. Every day we have to do a few things, but these 3 things are very central. The first thing is that whatever test or question that you are solving, bachcha, please have a register of errors. Please have a register जिस पर लिखा हो register of errors. है ना?
And if you are getting a question wrong from somewhere, please make an entry in your register of errors. I will also say that I think that some people, for example, those who are attending the SFG program, I think that a lot of students sometimes use it as a revision material. I will leave that strategy to you because I have seen a lot of students do that. But I think that what is more important is that if you are not able to answer a question, or if you are not able to answer a question correctly, you getting it wrong, it should be there in your register of errors. उसके बाहर लिखना register of errors. बच्चे जब select होते हैं तो हमेशा every year I see students having saying very clearly कि सर ये मेरी wrong वाली book है और 2 book बन गई थी prelims के पहले. That is the number of mistakes that I made, but I made sure that, so have a rule very clear, bacha, that if you get a question wrong, a basic question wrong, despite all the efforts, if you are not able to remember that, the Parliament of India consists of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and the President of India, and if you get an error there, you need to put it in the register of errors. You need to promise yourself 2 things. One is that if you're getting an error like that, you will read the whole notes and the whole topic again, which means that it is not just a question that is wrong, it is a sign of a bigger problem. Then if you are not getting this question wrong, it means you will get several other questions wrong. The second promise that you have to make is, if a same question comes in a subsequent test or in the UPSC exam, either you will get it right or nobody in the hall will get it right. Either you will get it right or nobody else should get it right. Be very clear with this, है ना? Focus पहले part पे करना, you should get it right, है ना? Because some people have other philosophies also, है ना? कुछ बच्चों की philosophy रहती है, winning alone is not important, others must also lose, है ना? तो इस चीज पर बहुत clear है ना? The second is right now, है ना? 2-3 just during COVID years, I still remember I was interviewing a candidate, mock interviews चल रहे थे उस समय. I saw on her wall, the wall were full of, physical map, world map, and full of tables. Now things happened anyway. Next year she improved the rank. She was always there. I still remember when I once made a 10 PM call to her. She said, जैसे आप लोग को है ना SFG का target है, वैसे answer writing उस समय COVID आ गया था. So we had to do 2. I knew that इस समय बच्चे अगर पढ़ लेंगे, तो result हमारा अच्छा हो जाएगा. So we had to do answer writing focus group immediately, because the exam had been postponed from June, है ना, to 1st October, and then है ना 10th of October हो गया था shift. तो वो 3 महीने anybody who'd study absolutely anything aligned to the papers. I still remember when we made that call, she said, sir, there is a long list of questions we are supposed to prepare before the test, but I make sure that by 12:30 or something, I'm able to prepare every question. Now I can tell you 2 things. One was that the list of questions that you needed to prepare before you appeared for your answer writing focus group test was huge. I will not deny at least 15-20 questions here or there. That is one. Second is that if one really sat for 4 to 5 hours, अगर कोई 4 से 5 घंटे सच में बैठ ले, तो it was doable. That's also true. All right, and you see that is how hard work is, because next year she ended up getting a 58 or 59 rank and moved from IPS to IAS. And so this is what I also want to tell you here is, on her wall, I saw her wall was full of tables and everything. I asked her, are you in Delhi or Rajinder Nagar? She said, no sir, I'm way back in my hometown. तो मैंने कहा अच्छा घर का भी पूरा सीन बदल दिया है, राजिंदर नगर का कमरा बना दिया. She said, yes sir. I want right now, you have been paying rents unless somebody is rich enough to buy a house here in Rajinder Nagar, which I don't think you should do. Though some students have such ideas, यही काम शुरू करते हैं. And the rents are so exorbitant, you want to be on the other side of the rent paying table, right? We all pay rents here. What you must do is, whatever you cannot remember, make it into a table. I repeat, whatever you cannot remember, you make it into a table. If you have a problem remembering that 10th schedule deals with anti-defection, all right, or if you can't remember which schedule has to do with what, it should be in a table. Okay, make sure that this very simple school habit of making something like a table. Ramsar Convention site, that is also a, for example, bird sanctuary. You write it here, you write another thing here. Make tables, and at least you should have 50 to 100 tables or 50 to 100 pages of notes. Anything that you have a trouble. You want to remember few things with respect to the Nehru report, put it under a table. लिख दो यहाँ पर उसके जितने points हैं, this Nehru report, यहाँ पर भी लिख दो this Nehru report, this fundamental rights Nehru report. You write it so that you are
conditioned that these all are a part of, for example, Nehru report. Whatever you have a trouble of है ना, when you go to have some food or some meal, या for example when you go home and then you have करेले की सब्जी, what is the easiest way to do it, to handle that करेले की सब्जी? You know, mom will make you eat it. When would you like to have it? In the beginning or in the end? In the beginning. कुछ बच्चों को अभी पता चला कि अरे ये भी कर सकते हैं, है ना, कि शुरू में क्यों, ताकि बाद में you are worry free and you can enjoy the rest of the meal. Otherwise you are always worried that last में सब कुछ के बाद क्या होगा, करेले की सब्जी, right? So whatever is troubling you, do it first. ये टेबल्स आपके हैं ना, अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएंगे. आई एम टेलिंग यू, पीपल आर एग्रेसिव, पीपल आर क्वाइटली वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल. देयर विल बी अ फ्यू 100 or 1000 पीपल लिसनिंग टू दिस, और उसमें से मुझे पता है कि 200 बच्चे हैं ना, अगले 10 दिन में करके खत्म कर लेंगे ये काम. Don't make something elaborate. It has to be crappy. It should not be in a pretty handwriting कि अगले 5 साल के लिए तैयार निश्चिंत हो गए. ये सिर्फ इसी प्रीलिम्स के लिए है. It has to be that crappy. It has to be that rough. It should not be done in a very pretty format. बच्चा मतलब जल्दी जल्दी स्क्रिबल करके लिखना है. रामसर कन्वेंशन साइट्स इन उत्तराखंड, वहां पर जो भी है, वेर एवर यू हैव समथिंग, है ना, दैट हैज टू बी पुट इन दैट फॉर्मेट. Second is whenever you have a friend coming in, है ना, it is not a bad idea to have friends, and I would say that 30-40 minutes, 1 hour of time pass with friends is important. Don't try, if at all you can do without it, it's a perfectly good thing. इसके कारण दोस्ती मत शुरू कर लेना, ये सर ने बोला है. अगर मैनेज कर रहे हो ठीक है, वेरी गुड, बट इफ एट ऑल यू हैव सम फ्रेंड्स, try to make sure that you are using that time productively. Make sure that, you know, when a friend walks in, the best way to deal with a friend like that is कि उससे सीधे आते के साथ LHS पूछना शुरू कर दो, है ना, तो कुछ तो ऐसे ही दोस्ती कम हो जाएगी कुछ दिन में, है ना. तो जिनसे दोस्ती तोड़नी है, the ones you don't want to be friends with, you start asking them LHS, और बोल दे कि दीवार से पढ़ के बता दे, ठीक है. तो अगर तैयारी कर रहा होगा, then you will also know the sincerity. You say, don't tell me, if you don't know, you just read out from the RHS. I will also know and you will also know. कुछ से दोस्ती ऐसे टूट जाएगी जिसने फॉर्म नहीं भरा होगा, है ना, ऐसे दोस्त. जनरली यू विल ऑलवेज हैव सम पीपल हु विल नॉट हैव फिल्ड अप द फॉर्म्स एंड दे विल कम एंड किल योर टाइम, और वो बताएंगे नहीं कि फॉर्म नहीं भरा है. किस दिन मुस्कुराएंगे वो, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा. व्हेन द प्रीलिम्स पेपर विल बी डन, यू विल सी दैट दे विल बी द हैप्पीएस्ट. पूछोगे कितने बन रहे, 140, ठीक है. तुम्हारे 15 डेज गए, रिजल्ट आएगा तो कहेगा मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, एज इफ दैट्स अ विनर आंसर, राइट. So that is one way how you will filter that. Make sure that whatever friends and family, है ना, if you have friends and family, some students for example need to talk to their parents for a very long time, सबको WhatsApp पे ये फोटो खींच कर भेज दो. You say that please ask LHS, I will tell you RHS, tomorrow you will ask me RHS, ठीक है. For those who are not knowing this, LHS is left hand side, RHS is right hand side, ठीक है. उसमें अगर फंस रहे हैं कि सर कुछ बच्चे इसी कारण सीसेट कोर्स ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं पता था तो सीसेट का कोर्स जरूर ज्वाइन करो, ठीक है. अगर ये नहीं था, ठीक है, तो ये बेसिक्स है, ये तो ये करना शुरू कर दो. मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट योर लाइफ शुड बी लिविंग, वॉट एवर कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ टेबल कैन बी पुट इन टू योर माइंड. रिमेंबर दिस गोल्डन रूल. इफ यू कांट रिमेंबर समथिंग, इफ यू कैन मेक इट इन टू अ टेबल, जबरदस्ती टेबल में डालो. Put it, if it can be pasted on a wall, you are sorted out. And don't worry too much about ruining your wall, ठीक है. It has to एक साल है. Make sure that that wall you will keep changing your flyers. अपने जितने walls पे आते हैं, उसके बाद you keep it in your file. And after 10-15 days, you change the poster on the wall. You stick it in a manner so that you can remove it and you can put a new one. You must do this and finish off. See, you of all sort of poverties don't have the poverty of ideas. Don't have the poverty of knowledge. I am telling you right now, a lot of you will come up with the basic assumption ki sir, I have a memory problem. How many of you feel this, that you have a memorizing problem? You can freely raise your hands. Okay, yes, a significant. I am telling you, when you will come for the interview, और उस समय अगर ये बताया जाए कि ये 300 पन्ने का रजिस्टर अगर 5 दिन में याद करना है, there will not be a single candidate appearing for the interview who will say कि नहीं सर, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसे तैयारी कर लूँगा. Because remember one thing about your memory is that it expands, ठीक है.
Thankfully for us, God has given us, to some extent, infinite memory. All right, या फिर CCTV कैमरे की मेमोरी की तरह, new things are written, old things may be a little, but your mental power is already right now. Do you feel, at least some of you, that you have been working the hardest in your life? Have you reached that phase, some of you? Working harder than you did in 10th or 12th? कुछ बच्चे अभी 10th में ही ज़्यादा पढ़ाई की है ना? Definitely worked harder than in college? नहीं, or you have unanimity. And a college education kind of does that to you, right? है ना? So definitely, and probably lot of you may be thinking, जो इंटरव्यू के समय के बच्चों का होता है कि सर पता होता इतना पढ़ लूंगा ना तो कॉलेज में 10 मारा होता, वहां पर 5.5 में रोते रहते थे, लगता था हो ही नहीं सकता. A lot of students get a 5.5, 6.5 CGP or a 7.5, thinking that it is not possible. Then they write the civil service exam and they want कि यार पहले पता होता कि दिमाग में इतना जा सकता है और इतनी मेहनत कर सकता हूं तो कर लिया होता. ठीक है? So your mind will expand. One of the ways to do it, make everything into a table, read it every day for 7 to 10 days and it will go on. It will finish, that problem will evaporate. The third thing is daily internet time. Now I know that all of you secretly already have daily internet time, but I'm talking about the wise utilization of it. है ना? So make sure that going onwards, whatever you have in your register of errors, whatever keywords you are getting through, please make sure that you are noting it down somewhere. And there was once one student, so she always, she was always on her phone. I once asked, after she got a good rank and she was with history optional, as far as I can remember. She joined the Indian Administrative Service. I still remember जब भी कुछ होता था तो तुरंत अपना phone निकाल कर करती थी. I was at time a little irritated. So once after everything got and done, she got a good rank. मैंने पूछा क्या कर, बोले सर anything that I find is, I read something like an advertisement, Consumer Protection Act. तुरंत उसको अपने मोबाइल में WhatsApp में डाल लिया या I have noted it down somewhere. Please make sure that whenever you are capturing anything that is coming new, for example, you know about the Great Indian Bustard. All right, what is it called in Hindi? गोदावन. Yes, देखो अब समझ, प्रीलिम्स के 95 days ही हैं, पता होना चाहिए ये, but okay, that's fine. So what my expectation is that it is a favorite question of UPSC. UPSC will ask somewhere around this question. अभी नहीं, प्रीलिम्स में नहीं, प्रीलिम्स में भी और बाद में इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आएगा एक बार. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इट इज अ बर्ड. कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये कुछ है ना डोंकी टाइप एनिमल होगा. इट्स अ बर्ड, राइट? So now what is my expectation is that if you know the term Great Indian Bustard, it should be a part of your daily internet time, anywhere between 40 minutes to up to 90 minutes. You must spend on the internet, just research on this keyword, the Great Indian Bustard. वहाँ से क्या होगा, and spend 5, 10, 12 minutes on researching each keyword. You search Godawan or the Great Indian Bustard plus the Hindu plus whatever Times of India, Forum, IS, whatever website, you will get the latest news on it. And that is where you will get a lot of information from where the commission will ask you a question. You will read about it, तो पता चलेगा कि vulnerable है या critically endangered है. क्या है? Critically endangered. तो पता चलेगा कि classification IUCN के क्या होते हैं, है ना? Second is you will come to know that why, you will see on Wikipedia or elsewhere, you will suddenly come to know that in 2022, the Supreme Court directed power cable companies, solar power companies, that you please lay down your cables underground because these birds lack frontal vision. सामने की आंखें नहीं होती हैं and they hit the power cables. है ना? And then the power companies refuse, saying that it will increase the cost. So what will happen is that you will be aware that this is the context. If you do this, you will be suddenly surprised that at first बच्चा क्या होगा ना, इन चीज़ों में क्या होता है first, you will be knowing these things. ठीक है? ऐसे ऐसे करके you will getting bits of knowledge. यहाँ पर थोड़े थोड़े है ना bits of knowledge में you will be doing your research, and I'm telling you, once you do it over a period of about 2 months, 3 months, these dots will start to connect and you will know everything. These dots will start to connect. तुम जब तीसरी बार है ना, जब when you will study for example another species, है ना, such as the pangolin or for example the Gangetic river dolphin, and then you will come back to IUCN, you will start suddenly getting all the connections right. है ना? You will come to know convention on biological biodiversity. You will come to know a lot of things like this. This has to be done. You will start connecting the dots and suddenly this will all make sense to you.
All right, this daily internet time is extremely important to be spent on the right things. है ना, इसको जरूर से करना अभी, and you will start suddenly feeling very empowered. Whether it is thorium reserve, you will suddenly find one line on the first page of Wikipedia that thorium reserves are found in the monazite sands of Kerala. एक लाइन पता चली, वहां से चीजों को प्रोसीड करते जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ योर नॉलेज बेस विल इंक्रीज. सो जितने टेस्ट सीरीज के पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो, वॉट एवर यू आर सॉल्विंग, इंक्लूडिंग यू नो SFG, प्लीज मेक श्योर दैट एटलीस्ट सम वर्ड्स, जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक यू ओनली आस्क्ड दैट हाउ टू प्रिपेयर दिस डिस्कॉर्डेंट टॉपिक्स. That is where you'll have to do, especially in topics such as science and tech, in topics such as environment and ecology, and in such topics such as agriculture. है ना, you will get the word like NPK. है ना, now some of you may say कि sir we are already doing certain courses, certain books we are reading and everything is clear. बच्चा एक चीज याद रखना, we always say two things are there about this prelims exam. You will always hear every selected candidate say one, कि you have to read from the same source again and again. That is very important. But the second thing which is again very important is that when you will solve the question, you will always doubt your memory. Do you doubt your memory? यार सही पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि I have the habit of stupidly reading something wrong. एक तो SFG will solve, at least SFG level 1 जिन्होंने किया, it will solve this reading carefully problem. SFG does that to you. Has it helped you, some of you? ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि जिस है ना कि लाइन ठीक से पढ़ने की ये हैबिट आपको डेवलप हो जाएगी. हाँ, यस, एंड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, दैट्स ए लाइफ स्किल दैट यू विल नीड. ठीक है, रीडिंग दैट इज सॉल्व इट. द सेकेंड इज व्हाट नोबडी टेल्स यू इज दैट व्हेन यू हैव रेड समथिंग, लेट अस से इन योर टेक्स्ट बुक और नोटबुक और इन योर नोट्स, a very simple concept such as even and then you read it from the internet again, trust me, that is the end of your doubt phase. Because now the same view has gotten reinforced. This reinforcement is very important. Why we tell you to read the same thing again and again? Because we know that you remember, you may at worst half remember it. When you read it again, it gets reinforced. When you get the same knowledge from a second source, then the story is over. Then you will not need to, you will not doubt कि यार एक बात गलत हो सकती, स्पेक्ट्रम में गलत पढ़ा हो सकता है, लेकिन दोबारा विकीपीडिया पे नेहरू रिपोर्ट पढ़ ली या फोरम पर एक आर्टिकल था, दोनों जगह गलत नहीं होगा. दो बार मिस्टेक आई वुड नॉट हैव मेड. ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. दीज थ्री थिंग्स शुड बी योर पिलर्स फॉर व्हाट यू डू इन द कमिंग डेज. Also, at this stage, I also want to tell you that बच्चा लोग, this is the point of time in our lives when we have to accelerate in the 5th gear. Which means that this is the point of time where we start studying, where we start studying 8 to 10 hours we have to study. Be clear with this, accept the truth, don't be in a lightweight mode कि मुझसे 3-4 घंटे की पढ़ाई नहीं होती, से ज़्यादा नहीं होती है. You will meet, every year you will meet some topper who will tell you all these things. But याद रखो, that is how people are. स्कूल में गए थे, जो बच्चा टॉप करेगा वो पहले ही बोलेगा मैं तो पढ़ के नहीं आया, बाद में नंबर उसी के आते हैं. So at least at this age and at this time you should be very clear, you should be very, so make sure that you are following, you have to study at least 8 to 10 hours. There was one very good user on the forum long back, Ayush, अभी district collector है, he got a rank 9. So that year the forum was very active. The forum is community website that we have. So everybody was saying there's somebody, how many hours you studied? So there were some people who created an anonymous profile. They were not selected. वो लिख रहे थे, है ना, which I studied only 4 hours a day because I had this problem, that problem. Ashish, I remember, Ashish करके use them था, electrical engineering. He said very clearly कि I am suddenly feeling that I am very average here. I personally had to study at least 12 to 14 hours because I am not able to remember things if I study less than that. Plus, I have to be in the zone. So I'm telling you, it's very difficult to study 3-4 hours a day. It's easier to study 8+ hours a day because after the 8th hour, you will get into the zone. And right now, you have to get into, all of you understand what is the zone? वहां तक पहुंचना पड़ेगा. कुछ को समझ नहीं आ रहा है कहां जाने की बात कर रहे हैं सर. When you study beyond a certain number of hours, you will get into the zone, there will be a sudden calmness. Please accept without any hesitation कि अब हमारे पढ़ने का समय आ गया है.
कुछ बच्चे पहले पढ़ाई नहीं करते हैं. I want to tell those who have not studied as hard as you had planned earlier that sometimes because you are guilty, I always see that the students who have been studying very hard throughout the year, वो इस समय अंडर परफॉर्म करना शुरू करते हैं बिकॉज दे हैव रीच द कि बहुत मेहनत हो गई. और कुछ बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं, अभी इंटरव्यू में बच्चे हैं ऐसे डरे डरे से हैं. क्यों सर? लास्ट में है ना 20-25 दिन पढ़ाई, 20-25 दिन तो नहीं लेकिन 2-3 महीने पढ़ाई की अच्छे से, प्रीलिम्स निकल गया. उसके बाद मुझे लगा कि मैं आकर मेंस का कुछ क्लास कर रहा था, सडनली मेंस का कॉल आ गया और मैंने सोच रहा कि उसके बाद मैं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहा था, इंटरव्यू कॉल आ गया. ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज this is the phase of your life, this phase of your preparation will require you to put a lot of effort. No matter even if you're studying all throughout, if you don't study in this phase, you'll be beaten by somebody who's studying very hard. Also, if you have been studying all throughout, you do have an edge. Remember one thing, all of us have a rank right now also. Do we have a rank or not? इस समय याद रखना हमारा रैंक है. That number is a virtual number. ठीक है. Right now we could be at different ranks. Right now probably in this class itself, with respect to the prelims examination, one of us could be probably the rank 1 of prelims. But does it mean that the 5th day the rank will be the same? No, it will not. What matters is what is the rank on the day of the examination. How is your performance? So I'm telling you right now, times are very crucial. Your ranks are fluctuating like share market prices. Every second it will be changing. So make sure that you get into the zone, and once you accept the truth कि पढ़ाई करनी है रो पीट कर जैसे भी, और बाकी चीजें नहीं करनी है, that this is not the time where you do anything else. The minute you accept the truth will set you free. है ना? The minute you accept it, the truth will set you free. उसके बाद all the debate quietens down. You know कि यार पढ़ना है और कुछ नहीं करना. So some of you have asked how many hours should I study? The correct answer is as many as you can. As many as you can. What you have to just do is you have to keep studying, take a break and have a good sleep, take a break and have good meals, है ना? And your daily chores that are needed, take a break and go for a walk. That is all. उसके अलावा क्या करना है? पढ़ाई करनी, सिर्फ पढ़ाई करनी. The number of hours becomes a lot peripheral right now. इस स्लाइड asking सत्या नरेला कितने घंटे काम करता होगा? काम ही करता होगा. ठीक है. ये चीज पर बहुत क्लियर रहना बच्चों. इस समय क्या करनी है? सिर्फ पढ़ाई करनी है और ये पूछना है कि सोना कितने घंटे है. That's a more appropriate question. Having said that, some of you, a generic advice is that some of you, generally we always tell that okay, try to have how many hours of sleep? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कितना? 12? A cat sleeps half its life. You know, a cat sleeps half or probably 2/3 of its life. A cat will sleep. So make sure you are not a cat. कि 16 घंटे सोते हैं और एसी चलाए, 18 डिग्री पर किया, रजाई निकाली, खरीदा कहीं से और हाइबरनेट कर गए. ने पूछे सो रहे? नहीं सर, हाइबरनेट कर गया हूँ. राइट? तो दैट हाइबरनेशन यू हैव टू अवॉइड. डोंट बी द किड्स. इस समय नकली दोस्तों से बचना. कोई अगर फ्री के छोले भटूरे खिलाए उससे बचना. है ना? कि सुबह सुबह तुमने पढ़ाई करने का सोचा और कोई कहे 11 बजे चलो फ्री में छोले भटूरे खिलाता हूँ पनीर वाले. है ना? देन यू आर डन फॉर द डे. यू स्लीप एंड यू वेक अप एट 5:36 PM. उसके बाद कहेगा सुबह के 6 बजे हैं, फिर कंफ्यूज कि जल्दी उठ गया मैं. राइट? है ना? सो मेक श्योर दैट यू डू इट. यू हैव टू स्टडी 8 to 10 hours a day. With respect to your time management, 3-4 things please keep in mind. One is that whatever you do between gaps, that is between an activity, you know, whenever you are doing a certain activity, ठीक है? Please have a very clear-cut boxed approach. You have done activity 1 and you have to do activity 2. इसके बीच time management, इसके बीच का time should not be too much. What should be the time between you going back home after this session and starting to study? What is the correct answer? Half an hour में you lose the plot. 15 minutes. Half an hour के बाद तो सुस्ती आ जाएगी. Half an hour में तो बेड में लेटने का मन करेगा. And then shorts and reels will take over your world.
right? In fact, your generation does not, see, technically, your generation does not have much of a time management problem. You will have a lot of what I call often the attention management problem. Time probably you can manage, attention much more difficult, right? We are living in times of an attention economy. Between these two activities, try to keep the gaps not more than 15, 20 minutes. After 30 minutes, you have probably lost the plot. If you reach your home at by 8:30, no, I won't take it that long. But if you reach your home at 8:30 or 9:30, whatever is the time, you cannot, and if you really plan to study, then by 8:30, if you reach 8:45, say you have to start studying. If you make it 9 o'clock, you will lose the plot. If you make it 10 o'clock, then you have to plan for tomorrow. Make sure that you do not, with respect to time, and do this. Second is that some of you may be sleeping a lot, some of you may sleep a less. To be very honest, I would not say that have a proper sleep, 8 hours of sleep. No. You do what suits you. There are no rules. Those of you who need to sleep 8, 10 hours on a daily basis, sleep as much as you want. Don't be sleep deprived. Some of you may be the ones who may sleep 4 to 5 hours a day, but once a week or every 5 days, you take a long sleep. Does that happen to some of you? तो बिल्कुल go with the flow, go with your own biology. There is no strict rule that please have a, देखो ये सब normal मत बना. Don't make such normal that have a 8 to, you are, I'm assuming most of you, in fact, nearly all of you are in your 20s. Yes, some people looking concerned. Okay? So make sure that what works for you, what has worked for you. If you sleep 4 hours a day, because everything is on order, sleep 4 hours a day. And then maybe by the third day you collapse. That's perfectly all right. You should collapse like that. And by the third day you sleep for a whole day. And then you have a guilt feeling and then you study very well for the next few days. No rules are there. Be very clear. You don't try to create false balances. You are not at an age where you need to have a work-life balance or something like that. Your body also supports you. What you think, है ना? Abhi ko you are at an age where if somebody takes off, goes away with your mobile phone, probably you can run and chase him. At least you should try. ये नहीं कि देख रहे हैं वहीं बैठ गए कि देखो गया, है ना? So what your mind can conceive, your body can achieve. You are at an age. Ask if you think that this is going to be the same. Speak to your parents sometime. You will realize that this will not. So you are in your age where your body has maximum energy. And so if you want to sleep 4 or 5 hours a day, some students sleep at 1 o'clock and wake up at 4 o'clock. I know them. I've been with them. I can tell you that they will sleep at 1 o'clock, they'll study till, sleep at 1 o'clock, wake up at 5 o'clock, they'll study till 10, after 10. Also, after 10, maybe they'll sleep. Also make sure that whenever you're tired, see, your cycle has to be simply study and sleep. When you wake up, what do? Study. Very simple. Isme you have to make time for half an hour or 1 hour of exercise or physical exercise, time for doing your daily chores, and maybe time for having food. This is what has to be there. With respect to daily schedule, I will not recommend you one, but I will tell you very simple, 2-3 cheezein bachcha. When you are studying right now for your prelims, make sure that you have one subject which is primary. Let us say you're writing your polity test. Please don't study 5 subjects in a day. I have often seen that internet पे कुछ दिया रहता है कि you study 8 to 10 polity, 11 to 2 economy, उसके बाद geography, ऐसे humanities की पढ़ाई नहीं होती है. You need depth, you need to give it a number of hours before you get into the zone. I'm sure that some of you who would be studying optional should be feeling this. कि 3-4 घंटे के बाद मजा आना शुरू होता है. 3-4 घंटे के बाद मजा आना शुरू होता है. So you start enjoying the subject, you have to get into the zone. I cannot, no matter what you do, you cannot be pushed into that zone. It will occur on its own. It will occur on its own. So make sure that every day when you study, you should have one primary subject. One primary subject, this should take approximately, with respect to, you should take 60 to 70% of your time. If you are, one primary subject, 70% of your time, maybe up to 80%. And every time, because you will get bored also have one secondary subject. This secondary subject, I can say that you can have a lighter subject, or you can have current affairs, or you can have any other subject. So how many subjects to study at one time? 2 subjects, one being the primary and one being the secondary. What do you do when you are tired studying primary subject? You study a secondary subject. Change the subject,
गेट, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है समटाइम्स, है ना. दूसरी चीज, what do you do after studying, है ना, you study, for example, you are studying and memorizing. This is really extremely important. What happens when you are done or tired doing this? You simply solve questions. Solve questions. जब भी बोरियत हो, mind passive हो, right now I'm assuming, ठीक है, I may be wrong here, but I'm assuming that most of you would be studying for long hours to a point कि दिमाग में घुसना बंद हो रहा है ऐसा? वहां तक पहुंचना पड़ेगा. अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर पहुंचे नहीं हो अभी. ये यू हैव टू रीड टिल अ पॉइंट दैट यू हैव द फटीग की सब कुछ सामने है और दिमाग में नहीं घुस रहा है. दिस शुड हैपन. इट्स नॉट अ फॉल्स. दिस इज द पोजिशन यू हैव रीच्ड. द मिनट दिस हैपेंस, you move to solving questions. How many questions should you solve? Anywhere between 15 to 25 questions you solve. Not more than that. See, I do not recommend to solve just too many questions like a maniac. That does not work also. I do not recommend just solving 100 questions or 200 questions every day. A person who's solving, let's say, 300 questions or 400, or even let us take a radical example, 500 questions every day, but is not reading, will be easily beaten by a person who's not solving any questions per day, but he's reading just as much. इस पर बहुत क्लियर रहना. ठीक है, you are saying, sir, every day I'm solving one question. My question will be, how many hours are you studying after the test? If you're not studying after the test, if you're not going back and seeing कि गलत क्या हुआ, then you will, I'll often use this, that you will be often like an army, right? Army formations होते हैं. Then that army formation में bulge formation, you are aware? You are fighting a terrestrial battle. And if there is a bulge formation, what will happen? If you don't take care of the back territory, ये enemy पीछे से attack करेगा आपको. This enemy will come back and attack you from behind. So whenever you should not just finish off writing your test. Writing tests is conquering new territories. You also have to defend those territories, which means that going back and seeing where I made a mistake. What were the questions I could not answer? है ना? And whenever you get a question wrong, please have this principle that if a question, and have this mantra. You know what is a mantra? A mantra is something that you उच्चारण करते हैं जिसका, which you always say. Mantras, they are not something demigod or something. They are something that you say. You say to yourself कि यार प्रेसिडेंट से मेरे आज 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं. अब प्रेसिडेंट टॉपिक से either I will never get a question wrong or everybody will get a question wrong. And then don't focus on the everybody part. Focus on what you can do. But you will have to say this to yourself. Those little promises that you make to yourself, that will rescue you in the end, बच्चा. है ना कि प्रेसिडेंट टॉपिक से मुझसे कुछ भी अब पूछ लो, अब यार बहुत हो गया, 3 टेस्ट में 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं. At some point, you have to draw a line, say that enough is enough. This is what, है ना? So go back and revise. Make sure that, so whenever you are studying, and also when you solve questions, please use your friendship in a constructive manner. If you are studying alone, perfectly all right. If you are studying with friends, पूछो, ठीक है, take some papers, some full-length papers or whatever. You could be solving even random questions. I'm not going to say कि polity पढ़ा, then just to make it little, you solve only polity question, just to add to the boredom that you are already having. You just solve random questions. And you send it. If you have a friend or a group of friends, उसको बोलो ना कि आज इस टेस्ट पेपर का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 सॉल्व करके सब लोग भेजो. बहुत बच्चे मुझे भेजते थे, आप लोग मुझे भेजना चाहो भेजो. बहुत बच्चे भेजते, सिंपली CWNA इस फॉर्मेट में भेज दो. ठीक है, कि कितने है ना, आउट ऑफ 25, ऊपर लिख दिया 25, ऊपर लिखा 25, करेक्ट हुए है ना 12, रॉन्ग हुए 3, नॉट अटेम्प्टेड कितने 10 करके भेजो. इसी से आपस में एक रिलेटिव स्कोर रहेगा. डोंट कैलकुलेट, द स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द CWNA इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपस में भेजो. ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा. सडनली दिस वेरिएशन विल टेल अ लॉट. इफ द योर नॉट अटेम्प्टेड इज मोर देन योर फ्रेंड्स, प्रॉब्ली व्हाट डू यू हैव? You have a knowledge problem. है ना? And sometimes if your not attempted as well as wrong is more, then also you do not have probably, and others have it right, then you do not have a accuracy problem. You may have a knowledge problem. You are getting things wrong. All right? Make sure that you do this. Day-to-day time management. 2-3 चीजें जो बताई, make sure that you follow it till the hilt. अच्छा, एक चीज और, previous year questions. This remains very fundamental. PYQs.
ठीक है, इसको ऑल द टाइम, वेन एवर, अनलेस यू आर इन द हैबिट, इफ यू आर एनी टाइम, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर हैविंग होम मेड मील्स और समथिंग, और वाइल यू आर हैविंग योर फूड, कीप PYQ सामने में खोल के रखो. Every day you must be looking at the previous year questions. I'm not going to, don't solve previous year questions, but dekhte raho. You should be in the end to the stage that you are only turning the pages. You are only turning the pages. तुमको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या है. Try to get a good compilation of previous year questions, जहां पर you have already marked or something. See why this is solving previous year questions is important for two reasons. One is that I can tell you that every year 3 to 4 questions will be repeated from PYQ. And most of the good students will miss in that range only. ठीक है, so वो question easily, and sometimes it's stupid that you are missing the question that was a PYQ. That is an unforgivable offense. That is an unforgivable offense. So one. Second is, why you should keep looking at PYQs. It will keep you realigned with what is the demand of the commission, not as much as the demand of any XYZ test series that you are doing. But it has to, you will keep knowing कि यार क्वेश्चन ऐसे पूछता है और सोल्यूशन ऐसे होता है, इसमें ये सही है. You will develop that logic and that will be continuously reinforced. And third is, it will give you the necessary validation that you need कि यार वैवल प्लान से क्वेश्चन पूछा है, अब उसके बाद ऑगस्ट ऑफर से क्वेश्चन आएगा. ये पता चलेगा तुम्हें. You will yourself will become a trend expert. That what is the current trend. तुम देखोगे अच्छा ये हर तीसरे साल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, they are continuously asking a question on Buddhism, so you know that Buddhism is important. Otherwise, what will happen? You think that it is a matter of surprise that Buddhism se question aaya. I will not deny that commission keeps throwing surprises, that it will do. है ना? But है ना? So once you see this reinforcement, you will know कि यार Buddhism Jainism तो करके ही जाना है, चाहे philosophy पूरी कर, सांख्य मीमांसा पढ़ पाए चाहे नहीं. Buddhism Jainism से तो क्वेश्चन हर साल नियरली आया है. So that reinforcement is very important. Me telling you will not do it. Even if I told you, you will not be able to absorb it as well as you will see it for yourself. And trust me, once you believe it, you will start seeing it. है ना? Once you believe it, you start seeing it कि हाँ यही ऐसे है. So make sure that you do that as well. Right now, also, one thing that again is very important is that with respect to your time management, that please make sure that this is the time where the time that you give to your relationships has to go down. Whatever relationships, loved ones, some unloved ones, with your family, friends, parents, whatever is the time that you have to give, कि मम्मी खाना खाया, हाँ खाया, क्या खाया, रोटी और पनीर की सब्जी, पनीर कैसी थी. अरे भाई, मैं कुछ लड़कों को सुना हो यहाँ पर करते हुए ऊपर, मैंने सोचा सोफा वोफा हटाओ, यही बात करते हैं, है ना? पनीर कैसी थी मम्मी, तुम पराठा अच्छा बनाती हो. मैं जोर से गया सुनने के लिए कि उसे पता ना चले कि मैं सुनने जा रहा हूँ कि बात किससे कर रहा है. पहले तो ये है ना, कहीं बाबू से तो बात नहीं कर रहा है ना? जो भी रहे, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम सीजन हैज सेट इन. The time that you're giving to friends, family, whatever, that time has to reduce now. It cannot be that the same time that you were having earlier. You have to tell your friends, जैसे ही कोई ऐसे friends, family वाले ज़्यादा फ़ोन करे, सीधे WhatsApp कर दो LHS, RHS का टेबल कि पूछना शुरू करो. Trust me, you'll get your time also. तुम कहोगे टाइम मैंने कम कहाँ किया, और तुम्हारी तैयारी भी हो गई. Use your relationships to your advantage, not to your disadvantage. And lastly, with respect to time management, please avoid negative people. इस समय उन लोगों से बच के रहना जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं. Avoid negative people, है ना? What is who are negative people? बताओ. ये बड़ा इल्जाम है. जो कुछ नहीं उनका काम है, इस बार अटेम्प्ट डिसाइड किया है कि नहीं देना है, सेशन अटेंड करने लेकिन आए हुए हैं, ठीक है, नहीं देना है. स्कोर पूछोगे, दुनिया के 60 to 70 के बीच में आए हुए हैं. 60, किसी के 85 नहीं क्रॉस की, वो कहेगा मेरा 97 से कम तो आया ही नहीं. फिर कहेगा कम हो गया, कितना? 94.8. ठीक है, एकदम बच के रहना. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दे आर नेसेसरली नेगेटिव पीपल, बट इफ समबडी इज नेगेटिव फॉर यू, इट्स नेगेटिव. ठीक है, you know, कुछ ऐसे लोग होते हैं, avoid those redundant people. What is a redundant person? There are 4 chairs in a table. What if you add a 5th leg?
हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन अ टेबल? 4. आपकी चेयर में भी 4 लेग्स हैं, कोई कहे 5 लगा देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, कोई एडेड ये नहीं है. तो redundant people, negative people, है ना? So you will suddenly realize that some people you will eliminate from your life, quality of life will jump. है ना? कि बहुत quality of life रोज की अच्छी, तुम्हें लगेगा टाइम ही टाइम है लाइफ में, ये तो बहुत टाइम है ना. इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी अ फ्लैटमेट कि सुबह उठे नहीं कि क्या चल रहा है पूछने के लिए चाय लेकर आ गया, है ना. तुम बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी पहुंचे तो वो भी मैसेज करता सीट रख लेना, है ना. मेक श्योर दैट दिस इज नॉट द पॉइंट. डोंट बी द डिलीवरी एजेंट फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली कि भाई एक बच्चा है जो पढ़ने वाला है वो लाइब्रेरी गया, यू आर सिटिंग एट होम, दिन भर फ्लिपकार्ट अमेजन जोमेटो की डिलीवरी ले रहे हो तुम, और एक बर्गर के चक्कर में ले रहे हो कि लास्ट में मेरे लिए भी बर्गर ऑर्डर करेगा एक. नहीं करना है. दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी टू सम एक्सटेंट रेडिकली सेल्फिश. इट इज अ क्वालिटी दैट इज नीडेड एट अ सर्टेन टाइम. इस समय दैट विल बी वेरी मच नीडेड. All right. With respect to few things, that is test series, how many test papers you should write. See, that will depend very clearly. There are so many students. अभी इंटरव्यू के बच्चे हैं तो एक मॉक होने के बाद मैं हमेशा थोड़ा चिट चैट करता हूँ. I'm telling you that there are some people who may not have written a single test. There are, because sir मुझे उसी का टाइम नहीं मिला. There will be people. But what I will tell you, take at least write full length 8 to 10 or 12 tests in examination mode. At least 8 टेस्ट तो जरूर लिखना. फोरम, दैट इज वाई वी हैव अ सिमुलेटर टेस्ट, उसको अगर कर सकते हो तो जरूर से करना. एंड राइट इट इन द एग्जाम मोड. डोंट वरी टू मच अबाउट नंबर आएंगे कैसे होंगे, उसको एग्जाम मोड में जरूर से लिखना. डू राइट एटलीस्ट 8, 10 और 12 full length tests. This is the minimum. If you want to write 30 tests also. But what I say is don't write every test. Every test does not have to be written in exam mode. टेस्ट दे रहे हैं, पैनिक में पूरा दिन बिता रहे हैं. सी वाई आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग यू टू राइट अ टेस्ट, फुल टेस्ट एवरी डे, इज बिकॉज सम पीपल डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी. योर एनर्जी, यू हैव वोकन अप, नाउ यू हैव रिटन अ टेस्ट, एंड देन नाउ यू आर टू टायर्ड टू स्टडी एनीथिंग. यू आर गॉन फॉर द डे, और एटलीस्ट फॉर हाफ द डे. इस तरह से नहीं होना है. सो यू डिसाइड that 8, 10, 12 full length, 15 full length test, you write it in exam mode. Other, you can always write it in practice mode. You take the full length paper, you solve that. Okay, whenever I'll get bored, I'll solve 25 questions. All right. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना while solving test papers, वो है क्या है ये? हिंदी में लिख दें इसे, गलत हो सकता है. क्या है ये? बदला. कुछ लोग तैयारी इसलिए के लिए आए हैं, है ना, किसी से बदला लेना है. डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बदला. हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं. टॉप 100 में मुझे लगता है 10-15 बच्चे तो यही मोटिवेशन रहता है और सेलेक्ट भी होते हैं. फिर पूछता हूँ सेलेक्ट हो गए, बदला लोगे? बोला अब सर ऐसे यही बदला हो गया, है ना. मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज एनीवे, राइट. मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज. ठीक है. सो वन थिंग इज दैट when, see, how you react becomes very important in where you will end up in life. You must have heard of, your neighbors or uncles saying कि मैं बच्चे का शक्ल देखकर बता देता हूँ कि ये क्या करेगा लाइफ में. I want to tell you that I do not want to admit it to anyone, but मैं भी वैसा ही अंकल धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ. ठीक है. स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं इसे, कि 2-3 हाव भाव देखे बोले अच्छा ये he will make it, he will not, unless he or she surprises me. The reason is very simple. It is completely based on what somebody does when something goes wrong. The diversity of candidates that come for the interview or the personality test is extremely diverse. वहाँ पर एक बच्चा डरा हुआ है. क्यों? उसकी मंथली सैलरी जो है ना वो छोड़कर आया है 12 लाख पर मंथ. वो छोड़कर आया हुआ. उसको लग रहा है कि सर बोर्ड कहीं नंबर कम ना दे दे कि इतना अच्छा पैकेज 1.5 करोड़ 2 करोड़ का इंडिया में पैकेज छोड़कर आए हो. सो ऐसा ना कि बोर्ड समझे कि ये किसी और चक्कर में आया है. वो डरा हुआ है. और दूसरे एंड पर वो बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन ओपन स्कूल से किया है, ही नेवर वेंट टू कॉलेज, और वो डरा हुआ कि बोर्ड ये कहे कि तुम्हें और कुछ नौकरी नहीं लगेगी इसलिए सिविल्स करने आए हो. एंड आई एम टेलिंग यू, बोथ ऑफ देम हैव एन इक्वल चांस ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू और बीइंग इन द फाइनल लिस्ट. So why? So whenever I met somebody brilliant, I am at all not excited these days. Why? Because I know that he's smart right now, but will he be smart
Through the whole process, that becomes very important. How long you can be brilliant, this is very important. Somebody says, sir, मैंने ये किया, मैं यहाँ से हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ कैम्ब्रिज से, मैं हर 2 महीने पर आई कम डाउन जस्ट टू हैव अ सेशन विथ यू, ऐसे करके बड़े सारे बच्चे हैं, ठीक है. There are enough number of candidates who are studying in London and they are coming back, after 2-3 months, इसी काम के लिए कि चलो एक बार हम लोग डिस्कशन करते हैं, they will go back and they'll start studying. There are people like that and they clear the exam also. अभी बच्ची है, ठीक है, so who's coming on 28th for an interview. तो what I want to tell you here is that how you respond. Let us say, जैसे एक बच्चे ने पूछा ना कि can we skip art and culture. What I want to tell you is कि यार art and culture का you wrote a test. How do you feel after writing an art and culture test? हाँ, कुछ बच्चे खुश हैं कि सर उसी में मजा आता है. अब जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, फॉर हिम इट्स अ वाइफ, सो यू हैव टू लिव, राइट. बाकी के लिए है ना अलग चीज है, राइट. सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज, है ना, आर्ट एंड कल्चर. लेट्स से यू हैव अ टेरिबल एक्सपीरियंस, यू गेट द लोएस्ट मार्क्स ऑफ योर लाइफ और दुखी बैठे हो कि करें क्या. अगर कोई भी टेस्ट पेपर तुमको स्ट्रेस दे रहा है, बच्चे उस टेस्ट पेपर से ज़रूर बदला लो. अब ये नहीं कि उस कोचिंग के बाहर बम मार देना, ये नहीं करना है, ठीक है, कि समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये वाला है, एक शीशे की बिल्डिंग है, मार देते हैं बम, ऐसा पेपर क्यों बनाया, ये नहीं करना है ना. ये सब, और नहीं इसका शॉर्ट बना देना, ये भी नहीं कि बम मारने की बात बता रहे हैं यहाँ पर अगर पेपर खराब हो, ये नहीं करना है. पेपर को लो, प्रिजर्व करो और उसकी फ्रेश कॉपी गेट इट फ्रॉम द मार्केट समवेयर, और उसको बोलो कि इसमें लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए. इन्होंने पांड्यास पूछा है, चालुक्यास पूछा है, चोलास पूछा है. इसको मैं फॉर एवरी इफ इट इज अ 2 आवर पेपर, जिस पेपर में बदला लेना उसमें 2 आवर इंटू 3 तो जरूर कर दो. 6 to 8 आवर्स यू गिव इन प्रिपेयरिंग ऑल द कीवर्ड्स. कि मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मैं विकीपीडिया से पढ़ूंगा और मैं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से या जहां से भी मेरे नोट्स है मैं वहां से पढ़ूंगा. वो पढ़कर एंड व्हेन विल यू राइट द टेस्ट, यू विल नॉट सी द सॉल्यूशन. यू विल नॉट, ये नहीं कि ABCD देख लिया और उसके बाद 100 का स्कोर लेकर आ गया. डोंट सी द सॉल्यूशंस, यू सी द क्वेश्चंस यू हैव गॉटन रॉन्ग. मेक अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. तुमने देखा यार इसमें वेयर एवरीबडी इज गेटिंग, व्हाट इज द फुल मार्क्स इन द फुल लेंथ पेपर 200. यू आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 80, 90, 100. यहां पर नंबर आए हैं 15, है ना. Of all sorts of problems of poverty, you have the poverty of marks. Solvable problem है. You take that paper, you study what. Don't forget seeing the key. Key नहीं देखनी है. But what you do is you make a list of all the topics from which questions are asked. उसको पढ़ो and after a gap of 2 weeks take a fresh paper, pencil से attempt करो दोबारा paper. You must make sure that now from 15 to 20 you must scale up to at least 70, 80. एंड देन बदला कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा, देखो फिर से कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, नहीं आंसर हुए हैं. डोंट रीड द सॉल्यूशन, डोंट रीड द दिस. उस पेपर को दोबारा दो अंटिल यू आर गेटिंग 150, 180. इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? इसको करो. वॉट एवर ट्रबल्स यू, डोंट लीव इट लाइक दैट बच्चा. यू मस्ट नॉट ओनली कॉन्कर न्यू टेरिटरीज बट यू मस्ट मेक गुड यूज ऑफ वॉट यू हैव कॉन्कर्ड. उस पेपर को 2 बार दो, पेंसिल से दो और देखो कितना स्कोर हुआ है, उसको कॉन्कर को. अदरवाइज व्हाट इज द अदर रूट? फिर अदर रूट यही है कि सर एंशिएंट मेडिवल छोड़ ही दे क्या. अब एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर छोड़ ही देते हैं, दुखी लग रहा है. देखो आवर एबिलिटी टू सक्सीड, लिखो कॉपी में, लिखो प्लीज राइट डाउन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. आवर एबिलिटी टू सक्सीड डिपेंड्स Our ability to succeed depends on doing things that we don't like. ठीक है, our ability to succeed depends on doing things that we don't like. You don't like art and culture, उसी को पहले इतनी बार पढ़ो कि कोई देख कर कह दे कि इसने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है. और सिर्फ कॉस्मेटिक वाला काम मत करना कि अब ये टिप सुन लिया तो अगले दिन किताब की हालत खराब कर दी कि सर देखिए ये मेरी आर्ट एंड कल्चर की किताब, कितने देर में, मैं बहुत खुश कि 20-25 दिन में लगता है 10 बार पढ़कर. नहीं सर 2 घंटे में ऐसे हालत हो गई है. अभी पिछले 1 घंटे से मैं ऐसे ही अंडरलाइन 2-3 कलम से लेकर रंग दिया इसे. वो नहीं करना है. यू शुड एज लाइक दैट. ये नहीं कि तुमने ऐसी हालत ये कर दी, वो नहीं करना है. ठीक है. सो मेक श्योर दैट व्हेन, प्लीज रिमेंबर दिस, ये फिलॉसफी को करो. पॉलिटी का टेस्ट खराब हुआ है ना, तो
क्या हो, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस ऑलवेज दैट स्टिग्मा विल बी देयर, डरे डरे रहोगे। देखो बच्चों, लाइफ में दो चीज है, एक डर डर के रहना और एक थोड़ा घुट घुट के रहना। ठीक है, समझते हो फर्क? वन इज दैट यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग एंड द अदर इज यू हैव अ सेंस कि यार everything that I wanted I did not get. I will tell you that no person will get everything that he wants. So second one is not an option. No matter what you will get in life, you will always feel something is less. ठीक है, but the first one is an option. डर कर नहीं रहना है. If you are afraid of art and culture, kill it first. है ना? आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा, सम ऑफ यू हु आर जेन्युइनली हैविंग अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ यू हैव नॉट डन अ क्लास, डू अ क्लास। एक बार उसको नोट डाउन करो। The first test series that we did in prelims, it was way back about 10 or 11 years back. So there was one person, his name was, he had the same name as the Prime Minister. So we used to make, I remember he was on the forum. He was in allied services. So that time we had one student who later got 44 rank. He said, sir, why don't you conduct that prelims test on the offline mode? So I said, okay, we don't have people, but I'll come and distribute the papers. So this person said that I want to really meet you. I said, okay. So he had gotten some rank, he was in allied service. So I said, okay, we don't have people, come and distribute the papers. तो वो आ गया सेंटर पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। So मैंने कहा ठीक है, पेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यू जस्ट वेट आउटसाइड, आई विल कम, लेट मी सी। ऐसा ना हो कि कोई चीटिंग, उस समय इंथुजियाज्म भी ज़्यादा रहता था, टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं तो देखो कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इट वॉज वे बैक आई थिंक अबाउट 10 years back. So what happened is, one student, one girl, young girl walked in. अच्छा, this person had cleared the exam, but he was a little doubtful कि यार मेरे को जो सर्विस मिली है was not satisfied. So this person had cleared the exam. So this girl comes in. So first I asked him what is the problem. He said, यार I've gotten information service and I went to meet the DG. He said कि तुम में attempts बचे हैं तो ये नौकरी करने की वहाँ तैयारी करके IAS लेकर जाओ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं सोच रहा था कि यार बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं। So this girl comes and she was carrying some pamphlets. So multiple things happened, but one of the things that happened, that girl said, no, so this girl, she came to know probably that he's probably selected. I don't have a weak memory of it, but I remember what he said. So this young girl says, no, sir, my basic problem is that I'm poor in history. Now this man, all right, this man, he got angry and he shouted in a mocking manner कि भाई हिस्ट्री में कौन कमजोर होता है। ठीक है, so I went out, मैंने सुना there was a certain commotion, so I went out कि भाई क्या हो रहा है। Then he said कि what happened, बोले कि she's saying that she thinks that she's weak in history. History is a matter of studying n number of times. If she said I was weak in maths, I will agree that some people are better at maths and some people are not good at maths. Some people will be very easily able to do integral calculus. Some people will cry and beg for death with an integral calculus question. Right? But history, it's easy. Why? Because you have to study it and you have to read it. And if you read it 2 times more than me, probably you will beat me. And if I read 5 more books on the same topic as you, I'll be able to beat you. History and humanities will always be a game of experience. So you don't have to become a historian there. Ancient and medieval, you have to study it. Maybe if at all you feel a trouble, you have to read it like a story and then fit in the necessary facts that is important. So when you are coming to art and culture, एक story की तरह उसको समझो. You follow the tools of categorization कि भाई 5 चीजें पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, पेंटिंग विल बी देयर, डांस विल बी देयर, और क्या है, स्कल्पचर इज देयर, देन आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्ट, ये सबको कैटेगराइज करो, मेक इट इनटू टेबल्स, जो जैसे ऐसे पढ़ा ऐसे ऐसे करके करो, इसमें ये है, इसमें ये है, एंड देन कन्वर्ट एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू tables as much as possible. Also, so one student very brilliantly, I think he put it in the mail also, that sir, do we have to read the thick book Nitin Singhania? So my point, so some student had sent this as a query. I'm telling you with respect to art and culture, please have the, philosophy of expanding middle. You know the philosophy of expanding middle? Just say, for example, trickle down theory? Thoda bahut padha hai na? So trickle down theory assumes that the rich will get wealth and the wealth will trickle down. Then there is another theory of expanding middle. This theory says that how do you fight poverty? You don't trickle it down. You make the middle class expand. So the middle class will expand and become richer. It will also include the poor. And that is how the middle class, the whole society will become middle class. Instead of, just the poor. Okay? So this is
art and culture and subjects that you don't like always have this expanding middle, that you read one basic source, the easiest source, and then you add things to it. Don't have a waterfall model that I will read the thickest book on the subject and then I'll do things. ठीक है, thickest books on the subject and I'll do things. ये नहीं करना है. एक मिनिमम बेसिक से स्टार्ट करना है, उसमें जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको प्लग इन करो. बिगिन विथ वॉट एवर हैंड रिटन नोट्स यू हैव, दैट विल सेव यू इन द एंड. ऑलराइट. हाँ, एक चीज another with respect to accuracy problem and negative marks. Bacha, some of you, how many of you have written SFG level 1? All right. Do you think that if you revise one more time, you get better at the accuracy? Yes or no? I'm telling you, don't misdiagnose revision problem with an accuracy problem. Don't misdiagnose the revision problem. I'm telling you, if you revise enough number of times, you will get more accurate. It will happen with revision. But if you read something one time and then decide to write an all India examination, competitive examination, don't have that college approach. College में क्या करते थे? रात भर पढ़े और मुंह उठाकर पेपर देने चले गए. Right? उसके बाद भगवान भरोसे छोड़ दिए, जो होगा सो देखा जाएगा. You cannot just simply read something one time and then expect to remember it and not get confused. वहाँ बैठे हैं, मैं भी पेपर वैसे ही बनाता हूँ कि गलत हो जाए दो चार का, मजा आता है थोड़ा, है ना. That is the little sadistic pleasure. ये क्वेश्चन में ये गलत करेंगे, यहाँ पर आएगा, है ना. तो questions will be framed in a manner such that they will be framed in a manner such that you cannot answer it. वहीं से क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहाँ पर एक्सेप्शन है या जहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी है. यू नो, एवरी ईयर आई आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई आस्क दिस, है ना, द ड्राफ्टिंग कमिटी, हु वाज द चेयरपर्सन? B.R. अम्बेडकर. क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा यूपीएससी में. कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, सरदार पटेल, है ना. तो सरदार पटेल लगता है और नेहरू हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा. लेकिन अगर सोचोगे कि एक बार में चीजें होंगी तो नहीं होंगी. जहां जहां एक्सेप्शंस हैं वहां वहां पर चीजों को याद करो. विथ रेस्पेक्ट टू योर रिविजन स्ट्रैटेजी, दो तीन चीजें ध्यान में रखना. विथ रेस्पेक्ट टू योर रिविजन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ब्रॉडली अगेन रिविजन स्ट्रैटेजी. फर्स्ट इज दैट वेन एवर, पहली तो एक चीज पर बहुत क्लियर हो, इफ यू आर रीडिंग समथिंग 3 times, लेस देन 3 times, बेटर नॉट टू रीड इट. I'm talking about this as a primary source. ये मत बोलना कि सर विकीपीडिया तो 3 बार नहीं पढ़ूंगा तो उसको नहीं पढ़ूंगा. That is not what I'm saying. What I'm saying is, what is your primary source? If you're planning to read it less than 3 times, better not to read it. ठीक है, better not to read it. You will not remember. Question will be framed in a manner such that you cannot recall from it. Whenever you revise, second is when you do revision, at least if not in the initial phase but in the later phase, a fast revision with multiple times. I'm saying this averagely. There are people who do slow revision, they read once and they're better at it. But ordinarily and generally, fast revision into multiple times will generally beat slow revision and a very careful one. With competitive exam, also with respect to revision, what is needed? When you are reading a page, you should know कि यहाँ पर जहाँ पर है ना वहाँ पर टिक और बॉक्स बनाओ. टिक और बॉक्स. जैसे ही तुमने देखा कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, नेगोटिएशन, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, अच्छा है ना, यू डोंट नीड टू रिवाइज अम्बेडकर्स नेम. ड्राफ्टिंग कमेटी वाला तो याद रहेगा. वहां पर कुछ मत करो, जहां पर लग रहा है कि ये वाली चीज नहीं याद रहेगी वहां पर टिक मारो, डबल टिक, और वहां पर बॉक्स बना दो. सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग, इन द एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू वर्टिकल रीडिंग. यू हैव टू डू वर्टिकल रीडिंग, मतलब पेज है तो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं और उसमें हमको पता है कि यहाँ 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 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं. जितना करना है कर सकते हो, बट इन द एंड यू हैव टू रीड द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स. जहां पर लगे कि फंस रहे हो, पुट अ टिक और ए बॉक्स. And when you read something, you'd look at the boxes कि यहाँ box बना है, यहाँ box. Because when you are revising, should revise. Don't revise बार stupid की तरह की drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar. ऐसे नहीं करना है. What you know, don't stop revising. What is internalized, let go of it. कहाँ focus करना है, जहाँ पर नहीं याद है. तो that is why you will use a tick and you will use the box tool.
Next is with respect to revision is that you do, there is something known as horizontal revision and there is something known as vertical reading. This is vertical reading, which means you scan the paper from top to bottom. तुमको पता इस पेज से 3 क्वेश्चन बनने हैं. Whenever you read something, हमेशा ये एप्टीट्यूड रखो बाय रिविजन, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट? इस सब चीजों से क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चे, ये नैक आपको डेवलप करना पड़ेगा. सो व्हेन यू रीड थ्रू समथिंग ना, you have to figure out इससे क्वेश्चन बनेगा. And who will guide you? Your PYQ that you are looking at every day will guide you. कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. नहीं तो ऑब्सक्योर डिटेल्स, कुछ बच्चों को मैंने देखा ऑब्सक्योर कि 32 मेंबर्स हैं, वो याद करने में फंसे हुए हैं कि 31 है कि 32. वहां से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं उसको स्किप करूंगा एंड आई विल फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरी, व्हेन यू रीड अ चैप्टर, आई कॉल दिस अ वर्टिकल प्रिपरेशन. दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2. हम कैसे पढ़ते हैं? वी रीड ईच वन चैप्टर, देन वी मूव टू द सेकंड चैप्टर एंड वी रीड टू द. प्लीज गो फॉर व्हाट आई कॉल हॉरिजॉन्टल रिविजन. हॉरिजॉन्टल मतलब देखो, जब पेपर सेट करेंगे ना तो कहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे? वी ऑल नो दैट कोई भी चैप्टर जब लोगे तो स्टार्टिंग में सब पढ़ेंगे, बीच में और पढ़ेंगे, छूटेगा क्या? लास्ट का पार्ट छूटेगा. बीच का अगर दिया हुआ है तो पढ़ेगा, छूटेगा क्या? टेबल छूटेगा. क्यों? क्योंकि सोचोगे कि इसको बाद में करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर तो हॉरिजॉन्टल रीडिंग समझेंगे. यू अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स यू रीड द लास्ट 3 पेजेस. आई एम अज्यूमिंग इट्स नॉट फॉर यू डोंट से कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी. अंडरस्टैंडिंग अब तक जो बननी है सो बन गई है. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिविजन पार्ट. कि इफ यू आर रीडिंग एनी बेसिक बुक, लेट अस से वॉट एवर नोट्स यू आर वेयरिंग, यू स्टार्ट सीइंग ना कि अक्रॉस द चैप्टर में लास्ट 3 पेज में क्या लिखा हुआ है. सडनली जो प्रॉब्लम सम ऑफ यू मे बी हैविंग कि वी आर रीडिंग एंड इट्स नॉट गेटिंग इनसाइड द हेड. What is the reason? Your mind is seeing the same photograph every time and it is not getting inside. Change that pattern. क्या करो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से पढ़ो, उसके बाद चले जाओ पीछे. ठीक है, माउंट बैटन प्लान. तो ऐसे करके जब रिवर्स सीक्वेंस करोगे, योर माइंड विल सडनली स्टार्ट रजिस्टरिंग. बिकॉज ऐसे क्या है, सीक्वेंस में वो याद ही नहीं हो रहा तुम्हें. यू आर गोइंग बाय द रिवर्स कि अच्छा पहले इस पन्ने को पढ़ते हैं. सी यू हैव टू स्टडी n नंबर ऑफ आवर्स and that will be very monotonous. So these things you have to do to break the monotony and get the maximum juice out of your number of hours that you are putting. All right, to make sure that we do horizontal revision. One day what you have to do, whatever is your polity book, you read through all the tables. आज सारे टेबल करेंगे and change the, see पढ़ाई लिखाई का हम, we are in the work of, you know, we do पढ़ाई लिखाई का काम. उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, you will not always be able to study at the same place. Accept this fact. So you will have to sometimes study on your bed, then sometimes you study on the floor. अभी summers आएगा, ठीक है, तो you sit on the floor and study. Sometimes you may have to go out in the park, take a book and you will have to walk and study. But you will have to study all throughout. तो इस पैटर्न्स को ब्रेक करना, कुछ चीज़ याद नहीं हो रही तो क्या करना है? पार्क, वो दिखावे का काम. डोंट सी, वन थिंग इज बी वेरी क्लियर दैट समटाइम्स यू विल सी कि सर आई एम नॉट लाइक दोज पीपल हु आर डूइंग नाटक इन द पार्क. मैं पार्क वाले बच्चों को भी मिला हूँ, उसमें से बच्चे रैंक लेकर आते हैं. कभी भी ये मत समझना कि कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से है तो आपको लगेगा कि अरे वो हल्का पढ़ाई, बिल्कुल ऐसा मत समझना. बहुत नॉर्मल से बच्चे पूछोगे क्या किया कि सर हर संडे को तो फिल्म देखते थे, वैसे बच्चे बिल्कुल टॉप 50 टॉप 100 में रहते हैं. ये मत समझना कि दे विल बी एक्सट्रीम, दे विल बी पीपल जिसने कहा कि सर 3 साल से मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट वॉच्ड अ सिंगल फिल्म. दैट ऑल्सो विल बी द केस. बट नेवर थिंक दैट दीज थिंग्स यू इन द एंड एवरीबडी वॉन्ट्स रिजल्ट्स. सो मेक श्योर दैट यू नो इवन गोइंग टू द पार्क, क्योंकि यार पार्क में जाकर इस बार सारे टेबल्स देख लेने और वॉक कर लेंगे इससे ऐसे करके टू एंड फ्रो. या फॉर एग्जाम्पल 10 PM के बाद आई विल टेक अ लाइट एंड आई विल स्टडी ऑन द रूफ टॉप. ठीक है, और ऐसे करके यू विल हैव टू स्टडी एंड व्हाइल यू आर वॉकिंग यू विल बी रीडिंग आउट. And when you study, for example, these ways, one of the ways is to read aloud. To read aloud and hear your own voice. ठीक है, देखो ऐसा है ना कि एक बच्चा था अच्छी रैंक, अंडर 40 रैंक, वेरी क्लियरली. सो मैंने पूछा हाउ डिड यू, सो ही जस्ट क्लियर प्रीलिम्स इन 2 or 3 months and he had not started, he started preparation after filling up the form. तो he said something, मैंने कहा I don't trust you. तो उस समय 5-6 साल पहले की बात है, मोबाइल फ़ोन उतना ज़्यादा नहीं था, लैपटॉप लेकर आया. ही सेड कि सर मैंने क्या किया था कि पॉलिटी की बुक
अपने विंडोज़ के लैपटॉप में मैंने रीड आउट करके रिकॉर्ड कर लिया था, और मैं वर्किंग कैंडिडेट था, 11 बजे ऑफिस होता था, 5-6 बजे भाग के आता था। तो मैं क्या करता था कि हमेशा उसी को सुनता रहता था, और मैं रात में भी चला देता था कि नींद में भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ दिस में लुक लाइक ए क्रेजी आइडिया, इट वर्कड फॉर हिम, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी दैट मैनियक, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट वॉट आई एम सेइंग इज वॉट एवर इज नीडेड यू डू, वॉट एवर हैक यू हैव टू टेक यू डू इट ऑल्सो, है ना। Then, with respect to revision, please make sure that I would not ask you to make short notes of everything. For the core subjects, no, you may not need to make shorts. If you make notes, there are some students who make short notes and study from there. Perfectly all right. But for non-core subjects, where there are no Bibles, उसमें आपको जो short notes बनाना है बनाओ. And notes should not be pretty. बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, either table format or something like this. And when you get too fed up of studying, and you cannot read this, then also उसी डायग्राम को दोबारा बना लो बच्चे। जैसे अभी आप लोग मेंस दिखोगे इसके बाद, तो फिलॉसफी ऑप्शन सोशियोलॉजी में कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं, प्रीलिम्स में उसको करो कि लेटेस्ट से यू रिटन दैट फॉर एग्जांपल नेहरूज है ना 14 प्रिंसिपल्स, और यू मेक दैट डायग्राम इन रफ कि उससे भी याद रहेगा आपको। इन चीज़ों पर काम करो। रिमेंबर योर माइंड विल रिस्पॉन्ड टू द एफर्ट्स दैट यू पुट। Your mind will respond to the efforts that you put. If you put effort, it will expand. बाहर से बड़ा नहीं हो जाएगा, अंदर थोड़ा सा HDD बढ़ जाएगा, ठीक है। Covering current. See, one thing that is very want to tell you very clearly. Those of you who are in current affairs classes, sir will give you the juice from where there will be at least 4 or 5 questions which are not given anywhere in any standard place that you will get every year. Also, we'll make sure that those who are in the current affairs classes will make sure that some printed material, है ना, very slim material will be given so that you extract the maximum juice out of it. All right, current affairs के लिए एकदम याद रखना कि at best the static versus current ratio will always be in the 60 to 80% will be static, and maximum between 10 to 40% will be current. So lot of people always study current. Make sure that you give only proportionate time. In prelims, you will hear certain toppers say, prelims is about current. Okay, you will hear such things. I will not deny it. But the point is that they are talking being very year specific. Suddenly current affairs aaya tha. And that also see people who, the current affairs part of civil services, conventionally, I'm not going to be, has been on the easier side, which means that वो हमेशा stated जगह से होगा, and it will be nearly, it will be solvable. But the time to do current affairs is as close to the prelims as possible. Abhi, you should start with current, but primarily make sure that you're finishing off the static and getting into the revision mode right now. है ना? So with respect to current affairs, those who are in the class from 13th March, sir will do the class, you follow that, and whatever printed material, don't do anything beyond that, you will not need it. ठीक है, और जो बच्चे उसमें नहीं हैं, whatever source you are following, you do that, but follow that as a secondary source. Primary is your static. Every time, it cannot be that क्या पढ़ रहे हो तो सिर्फ current पढ़ रहे हैं. Current cannot be your primary. Current has to be your secondary. 60-70% has to be primary. ठीक है? Then with respect to, what have I written here? Ideal source, ideal score in mocks. What should be a good number? See, you have to use things to your advantage. You have to use things to your advantage, which means that if at all you are not doing well in the mock test, one of the ways is you may think that, if I'm not able to score well in the mocks, I will not do well. That will not be the case. If you're at least 1 month or 1 month before the prelims examination, if you think that mocks are not giving you confidence, simply shift to solving them in brackets of 25 questions and focus on increasing your knowledge base. Don't focus on always solving it in an exam mode. Hannah, ideal score, how much do you think should be an ideal score? What rank did you get last time in any mock that you gave? Or anything? What score did you get in the last mock that you wrote? 67. Any SFG 1 students? कितना आ रहा था आपका?
76 SFG में, so that is a half length paper, no? हाँ, 76 is a, in my opinion, a very good score. But in a full length, depending on which mock you are giving, try to score, set a benchmark of scoring at least 110. Around that should be the purpose. Across all the mocks, again, this is a very subjective because some mocks may not be standardized. Suddenly you will have a low score. But कोशिश करिए कि try to being in the 90-95 परसेंटाइल में रहने की कोशिश करिए. ठीक है, ये चीज़ हमेशा इस पर हमेशा रखिएगा. Right? The number of attempts or mocks, yes. एक चीज you have to see with the level of competition that we have right now, you have to be clear with one thing, that if there are 100 questions in contemporary times, you have to attempt anywhere 85 plus, or I would say 90 plus questions you have to attempt. इस पर clear हो जाओ. In the actual examination, you will always find one exception. जिसने कहेगा कि they will come जैसे कि मैंने तो 79 attempt किए थे और 78 मेरे X correct हो गए. But let us not make role models out of exceptions. ठीक है, you broadly understand that anywhere 85 to 90 plus you have to attempt. What is the, if till 21 questions, if you say total attempts, let us say you are having 90. आपके wrong जो होते हैं, आपके मैक्सिमम 21 रॉन्ग तक माफ है. ठीक है, 21 रॉन्ग अगर हुए तो करेक्ट कितने हो गए? कितने हो गए? 69. ठीक है, इसके कारण नेगेटिव स्कोर कितना आएगा? -7 आएगा ना. 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना. 14 कैसे बोल रहा हूं? -7 आएगा. How much? -21 is there, right? This it means, yeah, okay, -7 minus उस लेवल से कह रहे थे, ठीक है. So I calculated like this, 7 2 9 और ये 52 into 2, somewhere along. समझ में आ रहा है ये? This is the questions. This is the questions that I'm talking, not the marks. You have gotten 21 questions wrong, which means that they will give the negative effect of 7 questions. So that is minus from the correct questions that you have. इस समय तक हो, तब तक safe zone में हो. With the number coming down, increasing to 27, you will have a chance. ठीक है? Once it crosses 27, you are entering the red zone. Beyond 30, the mathematics will go bad. 30 में कितना हो जाएगा? So 60 correct and -10, up 100 में पहुंचोगे. So there after 30, you will be start getting into the trouble zone, because you have to assume that there will be 2 or 3 questions which will be wrong and you do not know about it. ये error margin हमको लेकर चलना है. And with the current level of competition, no matter what, 85 to 90, usually. Having said this, if you have been working very hard, which I assume that you will be doing, if you find the paper exceptionally tough, forget all advice and go by your hunch feeling. It could be the case that paper is extremely tough. उस केस में less attempts होता है, लेकिन मान के चलना कि it won't. In that case also I will say that it won't go below too much. But 80 to 85 attempt करना ही पड़ जाएगा, even in a very tough paper. It won't happen that you attempt is 70. The students are also तेज ना, the rest of the जनता वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है. And this, the prelims is biased in favor of those who attempt more questions. Remember that when you say that when you are attempting 90 questions on an average, please know that direct and complete 100% confidence के साथ you will only know answers to between 30 to 40 questions max. ये आपको पता होगा कि अरे ये तो बिल्कुल वहां से आ गया, ये रहेगा. The next 30 to 40 questions is where you will have a certain confidence and you will have a, what I would say is maximum 20 to 33% error rate इसमें रहेगा. उसके बाद everything beyond this is a calculated guess. Everything this will be calculated or what I call it educated guess. ठीक है, उसके बियॉन्ड ये चीज जो है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ए एजुकेशन गेस.
नहीं मैथमेटिक्स सही है बच्चे ऑनलाइन. सो इस पर क्लियर रहना एंड यू हैव टू डू वेल फर्स्ट. नाउ वन थिंग अगेन बी वेरी क्लियर that all of you will say that this is my problem. I am telling you for a lot of you, in fact the ones that you are having this zone may be good, तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम है ना. ये जो 30-40 जो बुक में दिया है, that you are getting wrong, then probably it means that you are probably good at this and you have not read the book properly. If it is given in the common sources and you are getting it wrong, it means हमारे side से problem है. UPSC is not the unpredictable one. That error scope is not there. All right. Then with respect to, CSAT, I will not take it up. Own plan versus SFG. See, my experience has been, अभी भी कम से कम पिछले 3-4 साल के बहुत सारे मेल्स होंगे. I will always say, go with SFG and follow it to the hilt. There are 1100 बच्चे हैं internal students of forum who are appearing for the mock. We won't be able to take mock for everyone also. But I'm telling you, मैं अभी इसमें से भी है ना, at least there are 300-400 students who are from SFG and first time they are writing the mains because they were part of SFG. And I'm telling, and there are students who are appearing for the interview and they are writing SFG with you. That is also the case because इस बार interview का 3 batches में हो रहा है. Interview is likely to go until what date? हाँ, April तक डेट आया है. मान के चलो कि ये second week of May तक होगा. एक prelims एग्जाम कब है? 28 मई को. एक हफ्ते पहले करीब रिजल्ट आएगा और डिसाइड हो जाएगा कि किसको लबासना जाना है, किसको यूपीएससी भवन जाना है दोबारा पेपर लिखने. Right, that is which is why it becomes very challenging. Why it takes a huge toll, honestly. That 1 week that अरे चीजें हैं ना, so that becomes a big challenge. So one thing is that please follow the SFG. Also, some students are saying that how much time it will take. Some students have clearly said that it will take you more time. I am telling you, it depends on who you are asking. There are enough number of students who say कि सर मेरा प्रॉब्लम है कि SFG में टाइम वेस्ट हो रहा है. मैंने कहा कैसे? बोला सर जो सिलेबस है वो 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है, पढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं और मेंटल फोकस है कि एसएफजी करना है, उसमें नंबर आ जाते हैं. तो ऐसे बच्चे हैं और वो क्लियर भी कर रहे हैं. I'll not deny that they are clearing the prelims also. They have cleared it before also. They have done that. But you have to understand that if your preparation gap is there, तो वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो, रात भर पढ़ो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाउ मोस्ट पीपल हैव डन इट, कि बिल्कुल आंखें फूली रहती हैं. दैट विल बी द केस ऑफ यू. You wake up at whatever time, maybe one schedule which people follow is that they wake up at around 12-1 बजे 2 बजे उठते हैं, 2 से 7 पढ़ाई करते हैं, they write the paper, at 8 o'clock they come back and collapse in the bed. उसके बाद they wake up at around 12 o'clock or 2 o'clock, then they start studying again. ठीक है, and they sleep at 7 or 8 o'clock. 8-9 बजे के आसपास रात में सो गए, wake up at 1 o'clock 2 o'clock, studied for 5 hours. Slowly when you will keep reading and hitting your brain with the same ideas, it will get inside. It won't happen that you will be. I'll wind this up by 7 p.m. So some of you who are considering कि अब है ना, I'll try to take this up by 7 p.m. तो अपने प्लान की. Also what happens is, see, everybody has a eureka moment. What happens is, every year what will happen, somebody will start with SSG. It will be the first time he has woken up at 6:30 a.m. तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ये कि अब मैं 6 बजे उठ सकता हूँ तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ. उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अब मुझे समझ, पहले दिन ही टेस्ट लिखा कुछ, बिकॉज दे पुट. सो इन एसएफजी व्हाट वी ट्राई टू डू इज द एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो इज हाई, विच मीन्स दैट इफ यू पुट एन एफर्ट you will get rewarded. That is how it has been designed. At least level 1 is very direct correlation. Level 2, the correlation will be a little less. Why? Because more advanced questions will be there. So once you develop this, you have this feeling that you have understood and you start scoring marks, a lot of people jeopardize their own success. सिर्फ पॉलिटी में नंबर आए, उसके बाद लगा कि अब तो हो गया, now I know how to clear. Whereas actually the level of competition right now is so high that polity, economy, history have become hygiene factors, which means कि ये सब्जेक्ट तो सारे लोग पढ़ रहे हैं. जो गेम हो गया है वो हो गया है environment, geography and environment, science and tech, agriculture and current affairs to some extent. Now please don't pick up the wrong lesson from here. इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोला है कि गेम चेंजर ये हैं,
तुम्हें नहीं पता कि वो गेम चेंजर है, तुम गेम में नहीं हो, पहले पॉलिटी हिस्ट्री, उसके लिए गेम चेंजर हो, गेम में होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा क्या, तो यार अब पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पर, अच्छा पॉलिटी में बता दो, तो बी आर अम्बेडकर तक नहीं नाम याद है, हु फर्स्ट मोटेड आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें गलत कर रहे हैं कि सर मेरे को समझ में आ गया कैसे क्रैक करना है, क्या साइंस एंड टेक। अरे भाई वो गेम चेंजर है, पहले गेम में आओ, पहले बेसिक्स। सो मेक श्योर दैट दीज हैव बिकम मोर हाइजीन फैक्टर्स इन योर टाइम्स, सो यू हैव टू मेक श्योर। सो वन थिंग इज दैट एवरी ईयर देयर विल बी सम स्टूडेंट्स हु विल सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेटली फायरिंग देखा है कभी, यूपी में होता रहता है कुछ, ये कि जिसकी शादी में गए उसी को घायल कर दिया, ठीक है, उसके सॉरी सॉरी कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि क्या हो गया, है ना। तो स्टूपिड्स की कमी नहीं है। बहुत बच्चे क्या होता है कि नाउ आई नो हाउ टू स्टडी, उसके बाद प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले लंबा सा मेल आएगा, 2 वगैरह सब लिया रहेगा, मेल में 2 करके लिखा रहेगा, सर आई स्टार्टेड एंड आई वाज वेरी गुड, देन आई थॉट दैट आई कैन डू इट ऑन माई ओन। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ देता हूँ, 2 हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि प्रीलिम्स आई थिंक आई नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम। उसके बाद से मेरी पढ़ाई रुक गई है। अब मैं उसके बाद से मुझे लग रहा है कि 2 महीने का प्रोग्राम था, 15 दिन के बाद मेरे को आई हैव ड्रॉप्ड आउट एंड फॉर द लास्ट 1.5 months हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी एंड आई थिंक दिस अटेम्प्ट इज ऑल्सो गॉन। तो ये चैलेंज भी रहता है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू डू इट टिल द हेल्थ। Also, if you are not able to face the competition, insulate yourself by saying कि I'm not going to go by my rank or marks. Perfectly all right. But show up every day. Half the people win in a game because they turned up, they showed up. है ना? Today on my Facebook there was a post which I had posted 6 or 7 years back where rank 1 of IAS and IFS were from forum. So मैंने Facebook पे डाला था, उनको tag भी किया था. 6 years back, the way to get a rank in forest service was, for the first time the combined examination was there for the prelims for IFOS. उसके पहले अलग होता था. Now suddenly because civils people started ticking IFOS also, बहुत लोगों ने किया होगा, है ना, तो वो कर दिया, कट ऑफ चला गया ऊपर. मेंस एग्जाम कब है? जिसका कट ऑफ क्लियर हुआ, वन हु क्लियर द IFOS कट ऑफ हैज ऑल्सो क्लियर्ड सिविल्स कट ऑफ. मेंस एग्जाम कब है IFOS का? 1 महीना सिविल्स के आए मेंस के पहले. कौन देने जाएगा? कोई नहीं. देने जाओगे अगर 1 महीना, क्योंकि प्राइमरी गोल क्या है? सिविल्स. अब देने को तो जो देने चले गए उसी में सिलेक्शन हो गया. उसमें एक ही कंडीशन था कि भाई सारे पेपर दे देना, ऐसा नहीं कि 2 दिन देने के बाद लगा यार होना जाना नहीं है. कहाँ से? उस समय मटेरियल नहीं बना था, ठीक है, IFOS का, क्योंकि सिविल्स के बच्चे दे रहे थे. तो कहाँ से लिस्ट बनाकर जो है ना, पिछले साल के टॉपर को बोला, टॉपर उसने बोला देखो विकीपीडिया से पढ़ के चले जाओ, बुक्स भी नहीं थी, मटेरियल, उसी में रैंक आ जाती थी, ठीक है. सो वन गेम इन लाइफ इज जस्ट टू टर्न अप एवरी सिंगल डे. दैट इज अ गेम चेंजर, ठीक है. नंबर ऑफ रिविजन्स 3+ is what I call the first coverage. Try to revise at least 5, 7, 10 times. And trust me, you should reach a phase in your prelims preparation जहाँ पर 1 महीना पहले you are just turning the pages because you have marked everything. Everything is highlighted and marked. You are turning the pages and you know, ठीक है, you are turning the pages and know what to be read. So कोशिश करो, number of revisions you have it. Subject-wise time. You see, to be honest, what happens is some students say that, sir, questions more come from this area. Should we give it more time? Or questions, है ना, या फिर syllabus इसका बड़ा है, should we give it more time? See, logically what will happen in mains exam, we have world history. And now only one question will come from there, or no questions will come from there, or maybe 2 questions, or 0 to 2. Now, bacha, you cannot decide that on the number of questions. Because if 1 question only comes from there, you either decide to do world history, or you decide not to do it. But अगर करोगे तो कम समय दोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा. वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है तो 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे. ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा तो 1 घंटा पढ़ेंगे और हो जाए, फिर नहीं पढ़ना है. तो डोंट पुट इट इन द रिवीजन. यू कैन ऑलवेज मेक श्योर दैट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड. इट डज नॉट कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, और इससे क्वेश्चन कम आते हैं, उसको छोड़ सकते. दैट इज वन क्राइटेरिया. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड इफ इट टेक्स मोर टाइम यू विल हैव टू गिव इट मोर टाइम. इसी रीजन पे कहा गया है कि 10 घंटे पढ़ना है, नहीं तो फिर पढ़ने का करोगे क्या फिर? तो यू हैव टू गिव इट द टाइम, क्योंकि तुम्हें इसमें समय ज्यादा लग रहा है तो देना पड़ेगा. ये नहीं कि जल्दी, यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस एंड गो बैक. यू हैव टू नो व्हाट इज देयर. सो हाउ मच टाइम, विच सब्जेक्ट्स.
अच्छा, एक चीज और, बिफोर इन द एग्जाम, लास्ट वीक प्लीज मेक श्योर यू स्टडी सब्जेक्ट्स विच आर लेस लॉजिकल एंड मोर फैक्चुअल. Because if you study polity once now or economy, you may not need to revise economy at all. You may not need to revise. It's a logical subject. You will be able to answer question on the basis of inference. है ना? It is an inference-based paper. Even in polity, you can draw an inference. But in history, art and culture, inference वाले question नहीं रहते हैं. कुछ बच्चे कहेंगे सर inference लगा के solve करेंगे. Right, which of the following is likely to increase inflation in the economy? Inference based question है ये. अभी नहीं भी पढ़ा है तो भी काम होगा. Which of the following were the proposals of the August office? Which of these were part of Nehru report? अब दिमाग लगा रहे हो कि नेहरू जी के कितने बच्चे थे, क्या किया होगा. अच्छा, ये नेहरू थे वो अच्छा, अभी तो वो भी खतरा है आजकल, है ना. सो मेक श्योर दैट वो चीज इन्फरेंस बेस्ड नहीं हो सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट अनलेस यू अंडरस्टैंड इट दैट वे. SFG ऑनलाइन या ऑफलाइन, आई विल टेल यू इफ यू कैन डू इट इन द ऑफलाइन मोड. If you can, those of you who are coming from Gurgaon, we are going to have a residential academy there. We are planning one because it is getting a little too expensive for some of our students here. So we're planning a residential academy in Gurgaon. Those of you who are in Gurgaon, you will have an option to attempt these exams in the Gurgaon center starting this month itself. I think 28th years. When are we starting? 28th. All right. जितना कर सकते हो बच्चे ऑफलाइन करो. You will say कि देखो ऐसा है, यहाँ पर कुछ दिन पहले यही एक बच्चे की फोटो रैंक, अब ही एंड हिज दे वुड कम फ्रॉम वेरी फार ऑफ, ग्रेटर नोएडा से आते थे. तो उसके पहले क्या हुआ कि द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, उसको लगता था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि किस्मत का गेम है, मतलब इस बार दोगे तो हो जाएगा, इस बार दोगे नहीं होगा, है ना. इट्स लाइक रशियन रोलेट की, अच्छा इस बार दिया हो गया, अगली बार दिया नहीं हुआ. ऐसे नहीं होता है. दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. यू टेक अवे ऑल द वेल्थ ऑफ बिल गेट्स, सेंड हिम टू अमेरिका अगेन, ही विल अगेन बिकम ए बिलियनियर because he knows how to do it. तो फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, ठीक है, तो ही वॉज, आई रिमेंबर 2-3 बच्चे जो थे ना, 10 बच्चे कम से कम पहले बैच से, वो इतने डिलीजेंट थे. एवरी सिंगल पर्सन गॉट सेलेक्टेड, विच every person got selected in the top services. Some people got revenue and police, but they decided not to appear. आगे satisfied है, वो बात अलग है. But every single person from the very small limited handful of students that were there in the first batch, वो ग्रुप ही पूरा ऐसा था कि वो सारे लोग आपस में बहुत कॉम्पिटिशन था उस ग्रुप में. We did not have an AC that time. AC वेसी कुछ नहीं लगा था, पसीने छूटते रहते थे. फ्लोर पर फ्लोरिंग नहीं थी, मिट्टी थी इसके ऊपर, जो पहला बैच था. We did not have the resources to do it. और ट्यूबलाइट्स नहीं थे, हेलोजन लाइट टेंट वाले से मंगाकर लगा दिया था, ठीक है, येलो कलर की लाइट रहती थी, लेकिन हम लोग रहते थे. और बच्चे, वो ग्रुप ही बहुत कॉम्पिटिटिव था, ठीक है. दैट वॉज द ईयर व्हेन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम हैड द पोल्यूशन प्रॉब्लम. उसके पहले साल पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं थी. अचानक से पता चला कि कुछ AQI कुछ होता है, उस समय नहीं थी. और हमारी प्रॉब्लम थी कि मिट्टी थी फर्श पे, तो ऐसे ही डस्ट होता था. तो सुबह पानी 4 बजे के आसपास वी यूज्ड टू पोर वाटर सो दैट द डस्ट सेटल्स डाउन, बिकॉज इट वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. वो ग्रुप ही कॉम्पिटिटिव था. वो बच्चे, मैंने पूछा बात, ही गॉट थ्रू राइट सर्विस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इट टुक हिम सम टाइम बिकॉज थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा कठिन था. GS में ही ऑलवेज गॉट मार्क्स. ही डिड नॉट मिट, ही एंड हिज होल ग्रुप डिड नॉट मिस. एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू रियलाइज. तो एक दिन वो आया था ये कहने कि सर आई थिंक एवरीबडी इज चीटिंग. पर सर उसके नंबर आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि ही इज गेटिंग 45 करेक्ट इन 50 क्वेश्चंस, मैं गारंटी लेता हूं. तो उसके साथ में बैठा, मैंने बोला यही वो बच्चा है, पीटना मत, क्योंकि लंबे, ही वॉज अ बिट टॉल, 6 feet 2 inches. मैंने कहा देखो. नाउ ही सॉ कि जब उसको देखा कि यार ये बगल में जो बच्चा है, ही इज नॉट चीटिंग एंड एक्चुअली गेटिंग 45 क्वेश्चंस करेक्ट, देन द मेंटल रिवोल्यूशन हैपन कि ये पॉसिबल है. ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था. वंस ही रियलाइज कि बिना चीटिंग के 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, नेट स्कोर 41 बन रहा है, कुछ ऐसा. तो दैट वाज अ बिग रिवोल्यूशन. उसके बाद ही डिड नॉट कम एवर अगेन, डिड नॉट टर्न एट ऑल. मजे से प्रीलिम्स क्लियर किया. मतलब आई स्टिल रिमेंबर द होल ग्रुप से कि सर प्रीलिम्स में डर, रिजल्ट आया, वी वर वेरी हैप्पी. उसके पहले क्या फिलॉसफी थी, प्रीलिम्स लक से होता है, इस बार दोगे 6 अटेम्प्ट दोगे तो 3 बार होगा और 3 बार नहीं होगा, ऐसे हैं. दैट इज ऑल्सो द एवरेज IQ ऑफ द इंटरनेट. अभी यूट्यूब पे जितने बच्चे होंगे सब यही सोच रहे होंगे, ठीक है, कि 6 बार देंगे तो 3 बार हो जाएगा,
है ना, 50-50 का रेशियो रहता है लाइफ में। ऑफलाइन मोड में देने की कोशिश करो। इज वन डे एनफ डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। वन डे एनफ, उसके प्लान को ऑल्टर करके बताओ तो तैयार। एग्जाम है 28 मई को और तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तो सी प्लीज डोंट डू समथिंग कॉल्ड व्हाट आई ऑफन कॉल दिस, ठीक है, ये काम मत करना, ठीक है, जो बहुत बच्चे करते हैं। क्या है? रीड इट, व्हाट इज दिस? लाइफस्टाइल तैयारी। अपने पेस पे तैयारी करेंगे। सुबह कब उठेंगे? नींद खुलेगी तब। उसके बाद क्या करेंगे? पहले चाय वाय चलेगी, फिर बीबीसी वाली इश्यूज चलेंगे कि देश में क्या हो रहा है, किस नेता ने क्या। रात में, दोपहर में सोएंगे कब? नींद आएगी तब। रात में कब सोएंगे? नेटफ्लिक्स देखते देखते जब नींद आ जाएगी तब। दैट इज नॉट, यू आर इन ए मिशन मोड। इट इज अ प्रिकेरियस मिशन। यू कांट लेट योर योर लाइफस्टाइल की तैयारी कैसे करेंगे? जैसे मेरी लाइफस्टाइल है, सर मैं 9 बजे के पहले नहीं उठ पाता, एसएफजी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? यू हैव टू रन एज पर व्हाट इज द डिमांड। योर है ना, कि कमीशन से बोलो पेपर कितने बजे शुरू हो रहा है? 9:30 से। तुम कहोगे 10 बजे मैं उठ के कमीशन को चिट्ठी लिखो, ये ना कि 10:30 बजे तो मैं सोकर उठता हूँ। ये तैयारी मत करे, अदरवाइज डोंट डू इट एट ऑल, ठीक है। सो डोंट डू इट एट ऑल, है ना। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिएवल, राइट नाउ इज नॉट द फेज वेयर वी लीव आउट समथिंग। मैं 5 साल पहले ये कह रहा था और बच्चे छोड़ भी रहे थे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू डू इट फ्रॉम ए मिनिमल सोर्स, बट एक चेकलिस्ट कंप्लीट करके जाना कि यार एंशिएंट मेडिएवल मैंने कहीं से किया। अगर नहीं समझ में आए, इफ यू कांट डू एनीथिंग, देन यू डू इट फ्रॉम लूसेंट की जीके की बुक आती है, वहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी, ठीक है। बहुत लाइटली लेते हैं सिविल्स वाले बच्चे। अब ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ लो वहां से, ठीक है, कि पॉलिटी भी वहीं से पढ़ ली लगा कि यार एक बुक है, छोड़ो, स्पेस भी बचेगी, रखने की जगह भी नहीं है, बड़ी सारी किताबें हैं, एक किताब है ना, वो नहीं। लेकिन आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिएवल कहीं से नहीं तो वहां से पढ़ के चले जाना। बट पढ़ के, और वंस वॉट एवर यू डू वेल, यू डू इट वेल, और यू डोंट डू इट, उसको भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना। ऑल राइट, एनालिसिस ऑफ द मॉक्स। You are spending 1 hour writing a mock, spend at least 1 hour and up to 2 hours analyzing the mock, which simply means don't keep reading the questions that you are able to answer. कुछ बच्चे stupidly ऐसे करते हैं कि मैं analysis कर रहा हूँ। Now they have made analysis an end in itself. What is the purpose of analysis? To become better. It is not, analysis करना is not the final goal. It's not the terminal goal. It's the purpose. Question में अगर सारे questions सही हैं तो उसमें एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ वो 3 कीवर्ड्स पढ़ लेने की, यार ये चीज नहीं थी, सही हो गया लेकिन पढ़ लेता हूं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये चीज करना, ठीक है। बिटवीन 2 चॉइसेस, बिटवीन 4 चॉइसेस एंड 3 चॉइसेस वाला भी क्वेश्चन है। सी, व्हेन यू आर एबल टू जीरो इन स्टैटिस्टिकली बिटवीन 2 चॉइसेस, मोस्ट पीपल सजेस्ट टेकिंग देम, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर फुल लेंथ टेस्ट, यहां सिमुलेटर टेस्ट होंगे और सिमुलेटेड टेस्ट होंगे, अभी से यू सी कि यू प्लीज एनालाइज इन योर कॉपी दैट इन क्वेश्चंस वेयर यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, हाउ मेनी टाइम्स you were able to get a strike rate, if that is a net positive or not. Because it may be, see, there's a huge variation in the candidates even who are left with 2 choices. ठीक है, 2 choices के बाद भी बच्चों में बहुत वेरिएशन होता है। तो तुम्हें देखना है कि यार ये 2 है ना, मार्क दिस क्वेश्चन एज 2, उसके ऊपर छोटा सा 2 लिखो। इसका मतलब है कि आई वाज लेफ्ट विद 2 choices, देखो कि वो कितने क्वेश्चन जिस पर 2 लिखे हो वो करेक्ट हुए। एनालाइज दैट इज व्हाट यू विल हैव टू सी फॉर योरसेल्फ। And if you are not able to get a net positive there, then you will have to change one strategy. एक strategy आपको बताता हूँ, if at all you are facing this problem, that is how you eliminate your negative. ठीक है, once you have, let us say, attempted, let us say 80, 70, 60 questions, 50 or 60 questions. How many questions are left? 40 questions. You have to think in a manner, you will go for a iteration 1. इसमें क्या करोगे ना, you have 40 questions, your goal will be to identify only 10 questions. You will try to identify 10 questions, है ना। The minute you change that mental model कि यार ये 40 question में how many questions I have to get right? 10. Will you be able to get 10 questions? निकल जाएंगे। तो यहाँ से आप पढ़ोगे 62, अपने attempts पढ़ाओगे 62 कहाँ? 70. How many are left now? 30.
30 से you will change the goal. You will say कि now in these 30 questions, let me try and do 7 questions. ठीक है, chances है हो जाएगा शायद हो जाएगा. You will end up reaching from 70 to, let us say, if not 75, then if not 77, then at least 75 तक पहुंच जाओगे आप. ठीक है, so now technically this will come from, इससे 5 questions. You could not get 7 questions. You will end up at 25. Now from 25 questions, you have to pick up how many questions which you think are right. 5 questions. कि यार 25 क्वेश्चन, इसमें से 5 which I am most sure of. Are you getting it? Are you getting yes or no? ठीक है, 5 questions. यहां से आप बढ़ोगे 80 पर. ठीक है, you will be left with 20. Now in 20, you start thinking reduce the goal. Now in 20, how many questions you need? The 4 best questions which you think can be right. उन 4 क्वेश्चंस को निकालो. डू इट थ्रू आइटरेशन. तो तुम्हें लग जाएगा यार दिस इज इन द, सो एवरी क्वेश्चन विल हैव अ सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विथ इट. यू विल टेक दैट, यार ये रिस्क ही, इसमें कुछ नहीं पता है, बस तुक्का मार रहा हूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा आता है, या आई थिंक आई एम हैविंग अ गट फीलिंग. ठीक है, तो इसके बाद 20 में यू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, हो सकता है 3 मिले. आप यहाँ से है ना 80 से आप 83 पर पहुंचोगे, ये हुआ 17 में फिर सोचो 3 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. ठीक है, अच्छा, व्हेन यू आर डूइंग दीज आइटरेशंस, ट्राई टू डू, यू सी इन प्रीलिम्स, most people do not have a time management problem, so you should not have it. If you are having it, then there are 2 issues. One issue is that you have a reading speed problem. In that case, please develop a healthy habit of reading the newspaper. ये long term process है. The second is you will exceed the time in prelims because you have the habit of overthink. This, my dear friends, is the biggest problem with some students. एक चीज याद रखना, your intuition will rescue you in most of the questions. Intuition is nothing but some sort of long-term memory. You can always trust it. If a question is being solved by intuition, don't get it wrong by solving it by logic. होता है ऐसा कि पहले लगा ये सही है, फिर क्या लगाया, दिमाग लगाया, अब क्या हो गया, गलत. बहुत कॉमन है. इंट्यूशन, डोंट थिंक दैट ये इंट्यूशन है ना, यू आर, इंट्यूशन इज इन आवर DNA, इन आवर इवोल्यूशनरी कोड. ठीक है, उसको ट्रस्ट कर सकते हो. इट इज समवेयर, इट इज टू डू विथ योर instincts. It has helped you survive for a few thousand years. It will help you survive the paper also. Instincts are always, trust me, between instincts and weak memory, instincts will always save you. The minute you will be instinct, उसके बाद लॉजिक लगाओगे कि यार weak memory है. Weak memory, यार याद ये है. Weak memory will get you questions wrong, but intuition will get your questions right. ठीक है, तो this is, है ना. Yes, we have already reached our timeline. So that is all. We may take another session sometime. अगर होगा तो फिर we'll meet. All of you, एक दो चीज़ें और बोलूँगा, ठीक है, लास्ट, that those of you who have difficulty reading from big sources, 2-3 चीज़ें हैं. एक तो फोरम की पॉलिटी की बुक है, ठीक है, मास्टर इंडियन पॉलिटी, it should be there available somewhere. Master Indian Polity. So what we have tried to do here is, we have tried to summarize the basic book. अगर टाइम लग रहा है स्टैंडर्ड बुक में करने में, तो यू कैन सेफली डू इट, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट. मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक हमारा स्टूडेंट है, फोरम पर बहुत एक्टिव है, ही इज़ अ सेलेक्टेड, आफ्टर फाउंडेशन ही केम बैक, तो उसने बोला कि सर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है. मैंने कहा क्यों? बोला सर अभी समय नहीं है, मेंस की पढ़ाई करनी है और इसमें सब कुछ है. ठीक है, तो मास्टर इंडियन पॉलिटी की एक बुक है, उसको देख लेना थोड़ा सा, अगर लग रहा है कि बेसिक बुक में समय ज़्यादा लग रहा है तो. It will help you. You will not miss a single question. You will not have a situation where something is there in other sources but is not in this. That will not happen. उसके अलावा जो फोरम के अच्छे रेड बुक सीरीज हैं, उसमें you can very easily blank on agriculture. सबसे अच्छा तुम्हारा environment. Right now, in my opinion, this is the best book available environment पर. क्योंकि पिछले साल 7 क्वेश्चन तो मुझे पता है कि जो इससे थे डायरेक्टली, आपको वहाँ से हो जाएंगे. तो ये रेड बुक सीरीज जो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा. Lastly, those of you who are stuck somewhere, don't be shy in taking help, doing classes or something. Forum पे एक prelims preparatory rapid revision classes है. If you are getting stuck somewhere, please do it. Watch the classes in online mode, finish it off, make notes. You can expect to increase if you are stuck at some certain range.
कि मेरा इसके ऊपर स्कोर नहीं है, तो 15 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट कि 10 से 15 नंबर 100% हो जाएंगे. द रीजन बीइंग दैट समटाइम्स माय डियर फ्रेंड्स व्हेन यू आर डन विथ स्टडिंग, दैट ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर वॉन्ट गेट इनसाइड योर हेड. तो फिर व्हाट विल रेस्क्यू इज सुनी हुई बातें. फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट डिस्कस्ड नेहरू एंड डिस्कस्ड, है ना, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स. जस्ट यू मे हैव रेड इट, बट वंस यू हैव हर्ड इट इन अ क्लास यू विल नेवर फॉरगेट इट. इज दिस ट्रू और नॉट? इस चीज को डिस्काउंट मत करना, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट ऑन दिस ईमेल एड्रेस. Hold your horses, let me just finish it. You can always write. I may not be able to answer to every email, but I definitely read each one. All right? So I'll try to do my best. That is all. खूब पढ़ाई करिए. There is no higher purpose than studying right now. Do justice, not just to yourself, but for the time that you have already given to this examination. Right effort at right time is needed. If you don't do effort right now and then you do double the effort after the time is gone, then it is of no use. इसको समझना बच्चे कि पढ़ सकते हो. मैं अभी 10 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, प्रीलिम्स के अगले दिन से 20 घंटे पढ़ सकता हूँ. नॉट नीडेड. Competitive exams are always cracked not by, we will say study throughout the year, but they will require you to study harder before the exam. In the next 3 months or so, you have to study as much as you studied in a year. In the last 1 month, you have to study as much as you have studied in the last 3 months. And in the last 1 week, you have to study or cover the same syllabus as you cover in an entire month. This, my dear friends, should be your philosophy. All right. Thank you, class.